Namaste. Welcome to another episode of Now Vimash podcast. So we are back after a gap of 1 hour to discuss our pre-scheduled topic on the secularism and Hindumisia in Indian society. So today we have with us Dr. Bijeet Prasantha, who is a scientist and an author. So you can see the book. He has written this book called History of Hindumisia and Hindu Genocides. Okay. So he is an author. So he has done his research on historiography of genocides committed against Hindus across 1,000 years. Okay, from invasion of Gauri. So, and he's writing a new book on philosophy. So, this is going to be a kind of a precursor to his book on philosophy. And he's going to give a kind of a sneak peek into the subject that he's going to delve in his new book. So, Namaste, Vijitda. Welcome to the show. Namaste. Thank you for hosting me. Yes, yes. Thank you. And we appreciate you giving us time. So, it's really honor for us to have you on the show. And Namaste, Vaishali. We really Namaste, love you Vaishali. as an audience. Okay. So Bijidda, so today is going to be a topic on philosophy. The philosophy is Right. a little bit difficult topic for people to like comprehend because it's in nature is abstract in general. So why don't you just and one more thing, for the audience who are joining, we have a guest with us. Okay, a guest, Shumanda. Namaste, Shumanda. I think Sumanda is fixing his mic, Hello. so let him fix his Huh. mic. Yeah, yes, yeah, Abhijita. So you can start with an overview that when you talk about Hindumasia and secularism as a connection. So start with that and give audience a perspective. And before you start, people who want to come to our podcast live, ask questions to me or put your opinions on the topic. You can find the link in the members only post, which is there. So you can use the link and join us to share your opinions live directly with me and with the ask questions with Vijit as well. And that will happen around 40 minutes prior to end of the show. So do join us and share your opinion live with us. So Vijit, over to you. Thank you. Right. So the topic of today's discussion is how Indian secularism over time has become a tool of Hindu Misia. Misia is hatred. So it's sort of a Hindu hatred that from which secularism actually emerged, and now it is being weaponized by various factions, ideological factions, to further propagate Hindu Misia in the subcontinent as well as globally. This is the topic of Bijit, today. Bijit, for people who are not very initiated, the word Hindumasia, if you can explain, because a lot of people don't know the real meaning of Hindumasia. So Right, right. So Hindu Misia is like Hindu plus Misia. Misia is hatred. It's sort of a irrational hatred, and so you know that Hindus are not a very offensive race. Historically, we have not killed a bunch of people, colonized them, and like we are not that atrocious, bad race that believes in controlling others, right? Posing ourselves as superior to some other race and all these things. So there is, and we know that practically there doesn't exist any fear about Hindus. I mean, no one look at Hindus as a very like fierce creature or race which will sort of roll over their civilizational values or do some damage to their nation or their own values, so to say. So there is no Hindu phobia, right? But there exists some Hindu misia. There exists some Hindu hatred in the sense that exist some other factions in this world who believe that Hindus are not good, and they must be hated because they have a certain faith which are not in accordance with their own faith. And for that, Hindus ideally should not exist, or they will be punished in this world and in the afterworld. Um,
and also Hindu culture is inferior, hence they must be discarded and deleted from the world. And it is just because of the faith and the culture of the Hindus, due to which is not accordance with their own scriptural and otherwise other kind of values. And it is because of these things that Hindus must be hated, right? And in some faction, this is a spiritual task to hate Hindus, because Hindus are the others, right? Hindus are the kafirs, Hindus are the unbelievers. So, and this hatred, I must not mention here that, I mean, I must mention here and also keep it implicit that this Hindu hatred in is some sort of a spiritual task in some factions, right? So, and also because it is quote unquote scriptural, and there is no fundamental basis behind it, hence it is irrational hatred. So this is what Hindumisia actually means, कि it is irrational hatred for Hindus. Okay. Now the topic for today is Hindumisia of Indian secularism, right? And why this is a philosophical topic? Because already, I mean, we discussed so much about we have to reclaim our temples, we have to reclaim our civilizational values, we have to quote unquote Hinduize the Indian state. And in fact, Indian state is pretty much Hindu hating state. I mean, the Indian state is a Hindu mystic state, so to say. Hence, we have to reclaim our state as well, right? We have to, I don't know, we have to convince BJP or whatever parties they are in power. We have to convince them that please do something, some reforms which will favor Hindus, and all these things, right? We have to reclaim some sites which are disputed sites, like Krishna Janmabhoomi, for example, or the Gyanvapi, for example, right? So we know all the contemporary political events that are being discussed in this country. But in this lecture, we are going to understand the philosophy. Why? Because when we will discuss the philosophy, we will get to see the whole sort of chronological continuity that had led to a system like Indian secularism. And along with that, we'll get to know the doctrine of these ideologies, which have sort of ruled over Hindus for 1,000 years, and then eventually agreed to sign a contract like Indian secularism with the Hindus, right? In the words of many Muslim Maulavis, it is Indian constitution is secular, and this secularism is a muhaida. What is muhaida? Muhaida is a contract. So, for example, for the Muslim community by large, as per their Maulavis, many of their Maulavis, it is not a sacred thing. Hindu secularism is not something sacred that we have to adopt and then internalize, and we have to sort of use it to prosper together, right? It is there exists a binary as per them, which is Hindu and non-Hindu in this country, and this secularism is some sort of a contract between these two factions, between these two identities, between this binarity, right? So when we will be discussing the philosophy of it, in the whole process, we will understand how these powers have evolved and how their control over Indian mass and Indian state has historically evolved, and eventually, which led to the adoption of secularism in Indian constitution, right? And we have to know the philosophy because it will give us some words, some ideas, some structures that we'll be using to analyze other political phenomena and also predict the future of Indian secularism as well, and by large the dynamics of Indian state and behavior of Indian state towards Hindus. Right? Once you understand the philosophy, you can sort of act toward countering this Hindumisia of
Indian secularism, if it exists. And I will try to prove that yes, Indian secularism has a has an element of Hindumisia within it. Okay, so this is basically why this topic, right? And obviously, I will start with the paradox that okay, I'm going to start with the current scenario, which is an current paradox in modern era, and then I'll like I will instantly go back to the ancient period and medieval period, and gradually again then I will come back to the creation of modern Indian state and how philosophically it has evolved, the socio-polity and everything in their treatment to Hindu, in its treatment to Hindu and Hinduism. Okay, so what is the modern paradox? The modern paradox is that the Indian state, it has promised all the communities that although Indian state would not explicitly separate itself from religion, unlike European secularism, it will keep equal distance from all religion in the sense that it will treat all religions equally. Okay. Now, religion itself is an Abrahamic construct. Religion is not a construct which was conceived and invented and which came out of Indian dharma, right? And dharmic structure. So it is the schema of religion through which the British categorized Sanatana dharma into artificial divisions like Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism, etc., and tribals and whatnot. Now, then once secularism promised it will keep equal distance from all religions, suddenly we see some uh, sort of bias of Indian state towards religions like Islam and Christianity, and it is manifest through the fact that Islam and Christianity has started to be disproportionately benefited at the cost of money and wealth of the Sanatanis and their temples. So you know that Indian state has kept all the temples and temple board in I mean they have captured all these temples, main temples and temple boards, and they are getting the money from there. मतलब हम लोग तो अभी कोई पुरोहित को कोई पंडित को दक्षिणा भी नहीं दे सकते वो मेन टेम्पल्स में, and all this money that they get from our temple hundis, they are using that money in the, for example, madrasas, to run madrasas, to give payment to the teachers in madrasas. So very in a very manifested way we see that it is favoring Islam and Christianity over Hinduism, and this is so to say this is a paradox, right? Because Indian state is a secular state which is ruling the majority population, which is Hindu, but then in the very process, it is favoring Islam and Christianity, maybe in the name of I don't know some minority, the what minority empowerment and whatnot. So it is discriminating against Hindus, and in the process, it is discriminated against the majorities, right? Right, right, Vaishali. So, so this is a paradox, and we are going to find out how, matlab, the Abrahamic factions has managed to convince Indian state that this should be the norm in a secular state. Okay, we are going to find answer to this paradox, and I'm going to tell you that this answer is going to be a little longer than what you expect. Okay. Right. So from where I'm going to start, I'm going to start Hinduism and paganism, and then how they got attacked by these Abrahamic ideologies. Okay, so you know that, for example, in Hinduism and pagan ideas, they actually got inspired from nature to construct their code of spirituality, morality, and ethics. Okay, so for example, for Hindus, it started from some primeval cavemen who dared to look at the sky, and from there they started to, in order to understand these whole celestial motion of stars and planets and everything, they sort of
laid out some astronomy, and I think I have discussed it in one of the episodes already in our boomers. And in the whole process, they started to conceptualize the whole sort of celestial sphere as some this cosmos, and then at the Navi they kept the sun, right. So the sun is at the loci of at least the planetary motion, and there from there they they imagined that there is some Brahma. So at the locus they kept the Surya, and Surya is basically in the process they imagined Vishnu there, and Vishnu is one of the Adityas, by the way. So Vishnu was originally the god of sun, right? And from sun or from Vishnu, the Navi of Vishnu, you have the Brahma, who has created the whole sort of universe. So from this very sort of astronomical knowledge, Hindus spiritualized it and took it to the level of creating devta, and conceptualizing them through various metaphysical phenomena. So always there was a connection in Hindus and pagan religions between the nature and their concept of spirituality and their concept of divine and God and whatnot. Right? God is a Christian word, but devtas and Ishwar, right? Now, then Abrahamism got invented, which actually conceptualized God as something or some person, some old guy who is totally detached from this whole universe, who is sitting at some heaven, which is, I don't know, above us. I mean, in the strict way, there is no above and below because the earth is moving, right? Ek minute. Yes, let Vijitda come in. Okay. Till then, we will take one or two comments. So, Bashali, this has mentioned something. Please talk about how people don't understand the difference between pluralism and secularism and how this is exploited by minority. So, we will, Bashali, we will take Yeah, this. we'll take these questions. We'll take this later. Yeah, yeah, Vijitda, continue, please. अभी अभी एक कहानी सुना रहा हूँ सो द फिलोसॉफिकल कहानी नाउ ओके सो देन यू नो दैट अब्राहमिज्म वाज इन्वेंटेड व्हिच केप्ट गॉड aloof फ्रॉम द होल यूनिवर्स कहीं ऊपर कोई एक हेवन कॉन्सेप्चुलाइज किया जहां पे रख दिया उनको और इट वाज वेरी फिजिकल नॉट सम मेटाफिजिकल हेवन इट अ फिजिकल हेवन जो ऊपर था हम मतलब भूमि से ऊपर कहीं एक हेवन था वहां पे गॉड बैठा हुआ है और वो अपने खत में ही इज राइटिंग एवरीथिंग लुकिंग एट एवरीवन लाइक ए क्रीपी गाय एंड कीपिंग हिसाब ऑफ एवरी पर्सन राइट एंड देन फिर हेल बनाया जहाँ पे इवेंचुअली सो दिस इज sort of a teleological end ki everyone will have this whatever the last day of judgment from there most of the people will go to hell some will go to heaven and all these things right um, and this is the basic sort of story of pretty much every Abrahamic religion. And also, they conceptualize something called the believer and unbeliever, right? Like the believer and kafir, so to say, because so they say they say ki, okay, there is one God, and then there is some is divine scripture, and whoever believe and there is some prophet who magically gets some I don't know voodoo kind of thing who is sort of either son of God or some prophet, whatever. And you have to believe in that story. If you don't believe in that story, you're an unbeliever or a kafir. So it created that binarity कि जो kafir और unbeliever है, they will go to hell. जो believer है, they will go to heaven. Right? I mean, this sort see the concept of believer bhakti was there in Bhagavad Gita as well, but then they probably took it to some other very much physical extreme to create this division within humanity, to create this binary structure of believer and unbeliever, right? Now, this is the story we know it. At this very sort of construction since okay, so some part of history. So okay, so once you had these Abrahamic theories, you know that then Christianity near when the Constantine the Great got converted, he started to sort of
attack the pagan temples in Europe, and in Istanbul, for example, in various places I mean, across the Europe and Egypt and Turkey, all these places, he started to sort of destroy the pagan temples, um, and he started to convert them to Christian structures, okay, which will later be called churches. And then Islam came, right? Islam actually said that murti puja is haram, right? And it is in the very structure of is in the very history of Islam. The idol worshippers are actually the biggest sinners, because as per Islam, every kind of sin can be forgiven by Allah except murti puja. So if you do murti puja, no one going to save you, not even Allah. You have to go to hell. Okay. So this is the conception of Islam actually. Where from this very conception, Islam started to demolish temples in the whole of Arab. Then it invaded Indian subcontinent. It invaded, and then it started to destroy temples in various. It started to destroy temples first in Sindh, then Multan, then Lahore, then Delhi. Right, Rajasthan got saved partially because of the Rajput resistance there. But then from Delhi, they came down to these places, the Ayodhya, Banaras. Here they came down to like other places like Bhopal. I mean, all the main cities that were there, Ujjain, Indore, right? They went even south to Warangal, and various places in Maharashtra. So Islam gradually spread into India, and with the expansion, what it did was like it started to destroy and demolish and desecrate temples without any second thought. Okay. Um, Right. So this is the history of Abrahamism and its treatment towards pagan religions and Hinduism. And we know ki okay. So we know first of all ki from the very structure, it is a very physical thing that they did, right? In the sense that okay, it was written in the scriptures. They had to do it, hence they did it, right? But here I'm going to tell you something which may sound a little new thing, okay, to you, because now I'm going to for a while discuss the psyche of Abrahamism and its impact on the psyche of an individual. And by individual, I mean both sides, the believer and the unbeliever. Okay, because obviously someone who has adopted Abrahamism, he or she needs to change the psyche from the psyche of a pagan man to the psyche of an Abrahamic man. By man, I mean human being. Okay, if I use the man from here on, I mean it in the sense of human beings. Okay, now, so as I have said, ki it has impacted. It has left a huge impact on the psyche of all individuals, and hence in the psyche of a society, pretty much all society, and nationhood as well later, when the idea of nationhood started to emerge in the world. And this is the story of this. So first, what I'm going to discuss, let me give you a brief content of how Abrahamism affect your psyche. So I'm going to use some new word which I'm going to explain later on. Now, first, what it does is it manufactured some quote unquote resentment. Okay, in the word of Friedrich Nietzsche, resentment is close to resentment. Okay, it's like hatred for yourself and for others as well. So first, Abrahamism manufactured resentment, right, and then it subvert meanings and moral values, and this subversion leads to bad conscience. Okay, and then in the context of India, it lead to the subversion of the very state, the Indian state, which in turn creates within Hindus
inferiority and dhimmi. Okay, and this inferiority and bad conscience and dhimmi over 1,000 years, it leads to poverty of creativeness. Okay, and then it destroys our educational system and values and everything. Okay, once the education and our values get destroyed, it colonize and capture Hindu mind. Now with this, right, because of the dhimmihood, true synthesis between freedom and rationality becomes impossible. Okay, and because we lose that rationality and our sense of freedom, and we cannot connect them together, it creates fear, weird kind of fear, and every kind of fear, and most evidently the fear of genocidal extinction. Okay, and then gradually with the loop it manufactured resentment. So initially it created resentment within Abrahamic mind. Now it eventually create start to create it start to manufacture resentment within a Hindu mind about themselves. Okay, and using this sort of resentment of a Hindu mind, the resentment about themselves, the Indian state can import intention morality. ओके, मतलब धंधाबाजी जिसे कहते हैं, बंगाली में धंधाबाजी बोलते हैं, राइट, इंटेंशन मोरालिटी, लाइक सेकुलरिज्म. And I'm going to prove that secularism is an intentional morality. And so Indian state using the dhimmihood and resentment of a Hindu mind, Indian state import the intentional morality, like secularism, that Hindus could eventually accept as a principle of this land. Okay, it's a it's a subversion, but nevertheless, because Hindu mind gets subverted and afraid, and it start to hate itself, it accept intention morality like secularism, and eventually then I am going to project it to future to show ki how this secularism will, I mean, it has been used and it will be used to commit Hindu genocide. Um, I don't know. I should not have used the word, but like, okay, so it is going to do something bad for the Hindus. Okay, so this is the whole sort of content of the discourse that we are going to have from here on. Right. So the first point was how Abrahamism manufactured resentment within an Abrahamic mind, within an Abrahamic individual first. Right. So as we know ki, it was when the paganism got defeated by this Abrahamism, and it was I mean sort of adopted and appropriated by powers like Christianity, ideologies like Christianity or Islam. It was actually what I'm saying ki it was the defeat of depth and spontaneous human values before the shallow skin of a chameleon, right? So a pagan man was a spontaneous man. I mean, um, whatever he created, it created from whatever he observed outside, right? And he did not have a end in mind कि आई विल क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसके पीछे लोगों को भगाऊंगा, राइट, वट एवर स्पिरिचुअल आइडिया ही क्रिएटेड, it was basically it was spontaneous in a way, and hence the moral values were also very much spontaneous. And due to this spontaneity, a pagan man did not have a split within his own mind about ki okay, what I'm doing is wrong. He did not have this sort of constant tussle between himself. He was very much in coherence with his action. His mind was in huge coherence with his action, and because primarily because the morality was coming from within and not from some external book or external god watching him. Okay, so now the victory of Abrahamism created a God who sits in a remote heaven and to whom a human must submit without a question. It stopped caring about the spontaneous spirit of the human beings and how they could naturally conceive spirituality through connecting the natural phenomena with a higher power, and then try to explain the natural phenomena through the mechanism, the functioning of the higher power. Abrahamism, in this way, tried to kill
the indomitable human spirit to know the unknown, to see the unforeseen, to sell off contemporary conservatism with the hope of new discoveries, right? So Abrahamism instilled a weird sort of braggadocio, right? Ek ahankar in an Abrahamic man, and it's sort with the doctrine that first of all, the God had sent a book from the heaven to earth. Secondly, humanity must abide by the rules inscribed in that book from the sky. Thirdly, any deviation in human behavior, moral, or society from that one specific book will lead humanity to rot in hell. And fourthly, all structure that a man can conceive. Promethean channel suggested booking on the review speaks about respect for nature, the initial guiding principle. I see. Right. Um, right. This is what I have discussed. Thank you for summarizing it in such a nice way. And fourthly, all structures that a man can conceive in the realm of ethics, morality, society, science, technology, and culture should and would obey the basic and advanced structures delineated in that one book from the sky. मतलब जो भी होगा वो book के हिसाब से होगा, right? क्योंकि उस book में apparently सब कुछ लिखा गया है, and whatever has to happen has to be explained in the realm of that book and nothing from outside. Okay, you cannot use any argument, any axiom outside that book to explain the either natural phenomena or society or anything that you can possibly conceive in your mind, right? So Abrahamism, in this very process, it has claims the very soul of human beings that craves for freedom of thoughts, expressions, and spontaneity. It stops the natural evolution of knowledge and the passion of humanity to learn, respect, and evolve with nature. So what I'm doing, I'm reading from the notes that I prepared for my next book. I'm probably going to name it "Conscience of a Faceless Man," a critique of spontaneous intention and Abrahamic morality. This is the title that I'm thinking. And yeah, I've written, I don't know, only 60-70%, and planning to finish it by the end of the year. So what I'm going to do, these notes that I prepared for the book, I'm going to read some passages from there to explain and to sort of influence you with passionate language. Okay, so now moral discoveries have historically never been aloof, I'm writing, from their contemporary physical discoveries. But Abrahamism is such an abnormal doctrine that it has historically never cared to follow the rule, right? कि moral discovery physical empirical observation से आ सकता है. ये जो एक basic rule पेगन एंड हिंदूज अडॉप्ट किए थे, अब्राहमिज्म उसके उससे हट गया, एंड इन द प्रोसेस इट द होल डॉक्ट्रिन ऑफ अब्राहमिज्म it becomes very much abnormal, absurd, right? And historically, we know how Islam and Christianity, for example, and Judaism as well, has historically stood against the scientific inventions and discoveries. We know कि अरब में काफी साइंटिस्ट, मतलब जो भी थे काफी टाइम, मतलब इस्लामिक गोल्डन एज जो बोलते हैं वो एक्चुअली इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था. बट अदर देन दैट, फॉर एनी बिद्दत, इस्लाम में जैसे बिद्दत हराम है. बिद्दत मीन्स इनोवेशन, न्यू थॉट, हराम है इस्लाम में. क्रिश्चियनिटी में जैसे गैलीलियो को मतलब was kept in prison till he was dead. फिर ये जो heliocentric and geocentric model का जो whole tussle चला, मतलब Europe could not evolve from this whole tussle for a very long time. And also, if you consider Europe has gone through the dark age, which was at least around at least I think it was 1400 years of dark age Europe has gone through, right? Why? Because this whole Abrahamic doctrine, it was such an abnormal doctrine that it did not care about the physical discoveries. And it did not care to uh, sort of keep their moral values in accordance with the physical discoveries, right? Hence, it became stagnant in time, and in the process, it has stagnated the human thoughts and human freedom of expression. Okay. Now, no wonder how an Abrahamic cult or religion fails to go beyond physical,
discoveries, and worst of all, the superficial physicality that exists at the surface level of society, history, science, and civilization, right? Because it does not understand the very physics of nature and the metaphysical structure. It can never come up with sort of metaphysical principle which will evolve to spiritual principle in the whole process of human understanding. These Abrahamic cults only care about protecting by force, by hook or by crook, their holy books and the words therein, no matter how false and how unscientific they are. These cults go to the extent of even twisting and turning their grammar, meanings, and vocabs of their own languages in case the verses in their holy books face any serious threats from truths and scientific facts. मतलब अगर साइंटिफिक फैक्ट अगर तुम्हारे फेस पे आ गया कि सबको मानना पड़ रहा है, इन दैट केस दे गोइंग टू चेंज द होल ग्रामर, होल वोकेबुलरी, उनके डिक्शनरी बदल देते हैं और उस हिसाब से फिर वर्ड सेम रह जाता है, वर्ड्स को री एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, उस हिसाब से अलग अलग फिरका जन्म लेता है. No wonder these cults care a hang about the search for grand truths and values which are manifest in the geometry and genesis of the universe and in the world of life and vitality. These cults trap themselves into this frail functoid of creating vertical divisions within humanity in the socio-political benefit of the contemporary priestly classes. This frail functoid only breathes fire in that specific contemporary socio-polity out of which it was born, and only does promise a temporary solution at best, at the cost of ruining the infinite potential of humanity. ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं कि कॉन्टेम्पोररी सोशियो पॉलिटी को गाइड करने की कोशिश करते हैं थ्रू सम प्रीस्टली क्लासेस, राइट? प्रॉफिट हो गया, पादरी हो गया, इनके थ्रू. And in the process, because it is they are inherently atavist, right? They end up ruining the infinite potential of humanity, right? So in search of objectivity that is absent otherwise in an Abrahamic and a non-Abrahamic man. Okay, so in search of objectivity that is absent between otherwise between a Abrahamic non-Abrahamic men, Abrahamism creates the values of resentment. Okay, now I am quoting Friedrich Nietzsche, so I'm just going to enter his framework for a while. And Nietzsche said that the value of resentment is instilled in the mind of Abrahamics. It is a kind of slave morality. Slave morality मतलब जैसे भेड़ों का जो भेड़िया है ना, उनका जो शीप का जो मेंटालिटी होता है, स्लेव का एक जो जिस काइंड ऑफ मेंटालिटी होता है कि सरेंडर, सुपरस्टिशन, लेम एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स. तो ये जो स्लेव मोरालिटी है, अब्राहमिज्म ये थोप देता है एक अब्राहमिक ह्यूमन बीइंग पे, right? And so it instills a kind of slave morality that says, quote, no ab initio to anything outside itself, different from itself and not itself, and this no is its creative act, unquote. ये निश्चय यहाँ बोल रहा है कि नो एब इनिशियो टू एनीथिंग आउटसाइड इटसेल्फ, मतलब जब ये बुक या स्क्रिप्चर से बाहर कुछ भी आ जाए, इनिशियल रिएक्शन अब्राहमिज्म का रहता है, नो दिस इज नॉट ट्रू, राइट? तो ये जो एक टेंडेंसी है अब्राहमिज्म का कि बाहर से कुछ भी आए उसको इनकार करना है, इट क्रिएट्स अ वैल्यू ऑफ रिजर्नमेंट विद इन अ ह्यूमन बीइंग कि आई एम लिविंग विद दिस बुक, इट हैज सर्टेन लेट्स से नॉलेज, और जो भी बाहर से आया इट इज नन ऑफ माय कंसर्न, एंड टू सम एक्सटेंट आई हैव टू सॉर्ट ऑफ हेट these new discoveries or new knowledge, right? The only objectivism that an Abrahamic man adopts is this cunningly constructed and artificially announced binarity that exists between an Abrahamic believer and a non-Abrahamic non-believer. ओके, सो इन द प्रोसेस एक ही ऑब्जेक्टिविज्म रह जाता है. मतलब अगर कोई अब्राहमिक बंदे के पास कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, और उसके हिसाब से वो फिल्टर कर रहा है कि इसको रखना है क्योंकि वो बुक में है, इसको इनकार करना है क्योंकि बुक में नहीं है. तो इन द होल प्रोसेस ऑफ दिस होल फिल्टरिंग,
एक चीज इनवेरिएंट रहता है, एक चीज ऑब्जेक्टिव हो जाता है, which is this कि there exists a binarity between what I believe and what a kafir believe, right? In this whole process वो खुद को एक अब्राहमिक नॉन बिलीवर से खुद को अलग कर लेता है, एक नॉन अब्राहमिक पर्सन से वो खुद को अलग कर लेता है, एंड दिस इज द रिजनमेंट. सो एक रिजनमेंट ऐसा हो गया कि अच्छा मतलब खुद के अंदर रिजनमेंट कि जो बाहर से आ रहा है मुझे इनकार करना होगा, राइट, इवन इफ इट सीम्स टू बी ट्रू. और दूसरा रिजनमेंट हो गया कि जो बंदा अब्राहमिक नहीं है उसके साथ मेरा एक फर्क है, और वो जिसको यकीन करता है मैं उसको यकीन नहीं करता हूँ, राइट. तो ये दो रिजनमेंट इन द होल प्रोसेस अब्राहमिक डॉक्ट्रिनेशन आई वुड से, ये एक अब्राहमिक पर्सन के अंदर क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो ये गया मैन्युफैक्चरिंग रिजनमेंट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव कि दिस सबवर्शन ऑफ मीनिंग इट कैन लीड टू बैड कॉन्शियंस. ओके, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि इन द होल प्रोसेस एक बंदा जब सच को इनकार करने लगता है उसके अंदर मीनिंग, द वेरी मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, द वेरी मीनिंग ऑफ ट्रूथ वो सबवर्ट होने लगता है, राइट. सो लेट्स talk about this right now. Okay, so huh. So first I'm going to say कि externalization of values and birth of the intention morality or scriptural morality, right? So Abrahamic took this metaphysics of guilt and suffering to a different level of perpetual resentment and cruelty through their scriptural promises to wipe out pagans and Hindus from their native land, their dwellings, their beloved nest of nature through perpetual generational hatya. Okay? Now, previously, for a spontaneous, unconverted man, guilt was the result of his internal judgment about himself, stemming from the misalignment of his duties and his actions as perceived by his own conscience. एक पेगन बंदे के पास, एक हिंदू बंदे के पास, who is unconverted, who is spontaneous, उसके अंदर गिल्ट कैसे आता था? गिल्ट ऐसे आता था कि मेरा एक ड्यूटी है, मेरा एक एक्शन है. ठीक है, मेरा जो ड्यूटी है वो मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, और ये एक अपना कॉन्शियंस से आता है. अपना कॉन्शियंस बोलता है कि तुम्हारा ये ड्यूटी है, एंड इन रियलिटी तुम ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हो. वो जो गैप है वहां से गिल्ट आता है. सो इट द गिल्ट कम्स फ्रॉम विद इन, it does not come from some other thing or old man sitting outside. But in Abrahamism, this judgment of guilt was externalized to a specific book or a specific god or a specific padri or a specific prophet. Man himself was not the sole judge anymore to give a verdict on whether he should feel guilty for his own action after asking his inner conscience. Guilt was now a punishment imposed by an external judgment. It was either the divine book or God or prophet onto his conscience for mismatching his action or behavior with the expectation set by the agent. कि बुक में क्या लिखा है, गॉड क्या बोल रहा है, जो बाहर वाला बुढ़ा बैठा हुआ है ऊपर, प्रॉफिट क्या बोल रहा है, और तुम उस हिसाब से नहीं मान रहे हो वो, तो तुम्हारे अंदर गिल्ट आना चाहिए. सो नाउ दे एक्सटर्नलाइज्ड their sort of own morality because they externalize their morality to an external agent. तो बाहर वाला जो एजेंट है वो डिक्टेट कर रहा है कि गिल्ट कैसे आएगा. Now, okay, the cult and its god, okay, the judge to decide guilt was a foreign agent, now sitting in the seventh heaven, watching him all day, every day, and passing judgment for his every little behavior. तो उस हिसाब से बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है कि ऊपर कोई सेवेंथ हेवन में गॉड बैठा है, वो मुझे हमेशा मतलब क्रिपीली देख रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, वट एवर यू कैन इमेजिन, राइट. वो मुझे हमेशा देख रहा है, उसके हिसाब से वो अपना नोट डाउन कर रहा है, और फिर वो बोल रहे हैं कौन सा सही है गलत है, राइट. दिस फर्दरमोर रिड्यूस्ड एवरी प्रॉमिस ऑफ ए मैन टू हिज सोसाइटी डाउन टू द लेवल ऑफ ए सोशल contract. The duty of a man stopped being a spontaneous inner calling and became part of his barter and trade with the society. So यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो एवरी प्रॉमिस ऑफ मैन, एक मैन जो प्रॉमिस कर सकता है खुद को, सोसाइटी को, राइट, अब वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब एक ह्यूमन बीइंग का सोसाइटी की तरफ ड्यूटी नहीं रहता है, सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है.
राइट, कि सोसाइटी क्योंकि डिक्टेट हो रहा है वो गॉड द्वारा। सो मुझे क्या करना है, वो कहीं लिखा हुआ है, कोई बुक में लिखा हुआ है, तो मुझे उस हिसाब से रिएक्ट करना है। अंदर का जो कॉलिंग है वो बंद करके वो बाहर का जो एजेंट है उसके हिसाब से वो एक्ट करने लगता है। सो ये पूरा जो चीज है, उसका जो बिहेवियर है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट। अ मैन नो लॉन्गर हैज एनीथिंग टू प्रॉमिस टू अ सोसाइटी। द मैन हैज टू गो by some social contract as dictated and ordained by an external agent like God. The duty of a man stopped being a spontaneous inner calling and became part of his barter and trade with the society. ठीक है। सो हाँ, सो फिर इससे क्या होता है, इससे बेसिकली अंदर का जो कॉल है वो खत्म हो जाता है। तो जो सेंस ऑफ सफरिंग है वो भी थोड़ा सबवर्ट हो जाता है। कैसे? नाउ द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम कोट आई माई सेल्फ फील गिल्टी हेंस आई मस्ट सफर टू आई फील गिल्टी हेंस यू मस्ट सफर, दिस इज द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ ऑल ट्रेजिक इवोल्यूशन। मतलब कि एक जैसे अब्राहमिक, consider an Abrahamic man, right? If he sees there is some social menace, some social curse, some social wrong, तो उसके दिमाग में पहले आता है कि this is due to the curse of God. God is enraged. Why God is enraged? Because, for example, the whole world is not converted. Because there are some kafirs who are existing at some corner of this world. Due to them, some wrong is happening. उसके वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है, right? So it is the transition of humanity from I myself feel guilty, hence I must suffer, to I feel guilty, hence you must suffer, hence the kafir must suffer. ठीक है, ये जो ट्रांजिशन है, दिस इज द ट्रेजिक evolution of all tragic evolutions. Okay, it's the most tragic evolution. It is the most unfortunate epitome of the evolution of tragedy. And this single tragedy, along with generational hatyas, Gana hatyas, has finally succeeded in their much coveted, much ambitious project, namely mortalization of Hindu ideals, right? तो ये जो हिंदू इमोर्टल आइडियल्स है उसको भी मॉर्टलाइज कर देता है, जो मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। सो हियर आई प्रूव्ड कि एक अब्राहमिक मैन कैसे सफरिंग, गिल्ट, एनवी सबको एक्सटर्नलाइज कर देता है, राइट। एंड इन द होल प्रोसेस जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो सबवर्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि सच के साथ रहना नहीं है, स्क्रिप्चर के साथ रहना। सो यू हैव टू सबवर्ट द मीनिंग, एंड नाउ दिस सबवर्टेड मीनिंग इट लीड्स टू बैड कॉन्शियंस। ओके, okay, so the internal compass that once guided our actions and choices was deeply undermined with the advent of Abrahamic religions. What was originally a natural consequence of human condition gradually became an artificially imposed construct, a byproduct of centuries of cultural subjugation, the Abrahamic subjugation. Through a twisted manipulation of our instincts, humanity was made to feel guilt, guilty, and self-loathing, and a destructive inner conflict soon arise. The root of this bad conscience, right? कि हमेशा गिल्ट फील करना है, मतलब इतना गिल्ट फील करना है। Just imagine how suffering and guilt was sort of spiritualized in doctrines like Christianity. मतलब सफरिंग को इन्होंने स्पिरिचुअलाइज इतना कर दिया कि उन्होंने जीसस को एक क्रूस में, एक क्रॉस में टंगा दिया। मतलब एक भगवान को उन्होंने क्रॉस में चढ़ा दिया और उसे नेल कर दिया। So this is the extent to which Christianity has gone to spiritualize suffering and this conflict within yourself, this guilt, right? कि ये जो सफरिंग है ये स्पिरिचुअल है, तुम भगवान के लिए जो सफर कर रहे हो वो स्पिरिचुअल सफरिंग है। इस तरह से जो सबसे गंदा स्लेव मोरालिटी था उसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया क्रिश्चियनिटी ने। और उस मतलब बिकॉज जैसे जीसस को क्रॉस में टंगा दिया और उसके लिए खुद को दोषी ठहरा दिया कि ह्यूमैनिटी इज गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, और उसके हिसाब से फिर इटर्नली पूरे ह्यूमैनिटी को एक बैड कॉन्शियंस में डाल दिया।
कि we are responsible for Jesus being crossed, okay, Jesus being nailed. So this root of bad conscience, it's not sourced from our inherent spontaneous nature, but it generates from the Abrahamic assumption that all human beings are sinners. This false assumption is fabricated to deliberately distort the human instincts and desires through forceful imposition of Abrahamic scriptures. Hence, this birth of bad conscience, it is not a natural outgrowth of individual actions or reflections, but rather the result of an oppressive social mechanism that imposes a value system foreign to human beings' natural instincts. The subversion of meaning is the first step in this process, right? Consider a human being, once capable of experiencing the full breadth of their instincts. Instincts of power, aggression, desire, vitality were gradually molded by emerging religious and moral systems into a sheep, into something less than themselves, something ashamed of their very nature. The concept of bad conscience does not arise from free will of the individuals. It is the artificial creation, a product of slave morality that imposes guilt upon natural impulses. Matlab, if you are feeling, you are having pride, if you are having feeling powerful, if you are feeling aggressive, if you are desiring something, if you are having vitality, हर टाइम पे खुद को क्वेश्चन करना है कि मतलब आई एम रॉन्ग, राइट? आई एम नॉट बीइंग submitted and devoted to God, and the God will not sort of pardon me for these sort of sins, right? जो खुद का instincts है उससे खुद को अलग कर दिया. Here I am not saying कि मतलब तुम्हें बिल्कुल बह जाना है, उसके लिए दम्यता तो है, रिस्ट्रेंट तो ऑब्वियसली इज अ क्वालिटी, बट यहाँ पे जैसे द वेरी वेरी प्राइड ऑफ अ मैन, राइट, अ ह्यूमन बीइंग, उसको जैसे दबोचा गया. द मैकेनिज्म ऑफ द सबवर्जन इज सिंपली yet profound. The meanings are hijacked. What was once a source of strength, our primal will to power, our desire to overcome, to express our energy, becomes a source of guilt. In this Christian tradition, for instance, virtues such as blindness of faith, meekness, surrender, and self sacrifice become sanctified, while the natural impulses for strength, self assertion, and pleasure were demonized, which used to be an Arya's instinct of power, which was once an unshackled force of creativity and vitality, was now reinterpreted as sinful and dangerous and in Abrahamism. What was once celebrated as greatness became reviled as arrogance. The strong, the powerful were condemned as the haughty unbelievers by the very society that had once respected them. तो मतलब इसका एक हिस्टोरिकल सॉर्ट ऑफ ओरिजिन भी है, क्योंकि इनिशियली फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी, राइट, इट वाज मतलब इट वाज नॉट अ बिलीफ ऑफ द नोबल मैन इन रोम, इन द रोम फॉर एग्जाम्पल. वहां पे जो नोबल लोग होते थे, दे डिड नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, तो वो एरिस्टोक्रेट नोबल होते थे, इसलिए जो जहां से क्रिश्चियनिटी आया था वो नीचे तबके से, दे यूज्ड टू हैव एनवी टुवर्ड्स दिस नोबल मैन. और नोबेल में एक नोबेल रोमन का जो प्राइड होता था, एक पावर, सेंस ऑफ पावर होता था, एक सेल्फ एजर्शन होता था, एक कॉन्फिडेंस होता था, उसको ये जो क्रिश्चियन नीचे तबके के लोग होते हैं, दे यूज्ड टू एनवी इट. हेंस इन द प्रोसेस, this is not, I'm not saying this, Nietzsche is saying this, in the process they started to become jealous of all these qualities, and all these qualities hence became haughtiness. Okay, कि God would not pardon you if you have these qualities. Be a sheep, be a lamb of God. What they say, right? Be a lamb of God. कि भगवान का भेड़ बन जाओ. This subversion did not stop with societal interpretation of what was moral. It infiltrated the very way people viewed their own minds and bodies. The Abrahamic doctrines, among others, implanted a destructive split within the self. खुद के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट कर दिया, where individuals began to feel the full weight of moral condemnation for their natural impulses. कि मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं गिल्टी हूँ, भगवान तो देख रहा है,
शायद मैं मतलब ये मेरे नेचुरल इम्पल्सेस है, बट आई एम सिनर because I'm having these sort of impulses. Desires for power, pride, plurality, sex, or freedom were no longer seen as part of a healthy life force, but as sinful urges that needed to be suppressed. What had once been an intrinsic expression of life became a source of shame. Over time, the human psyche became a battlefield. The conscious mind, conditioned by the religious forces, began to view its natural impulses as morally inferior, forcing individuals into inner conflict. Thus, the birth of bad conscience, the feeling that one is guilty, not just for what one has done, but for the very nature of who he is. ठीक है, मैं जो हूं उसके लिए मुझे गिल्ट फील करना है. This is the gift of Abrahamism to humankind. This internalized conflict does not manifest simply as a passing feeling of guilt. It grows into something more insidious: self punishment. The bad conscience, once triggered, is not satisfied with mere guilt. It seeks atonement, or worse, self flagellation. Here, guilt evolves into a cycle of self recrimination, and self inflicted punishment becomes a form of atonement for the crime of existing as a human being. The individual begins to see the very essence of their vitality as something in need of correction. The natural human instinct to live, to assert, to express is now seen as an offense to the moral order. This is the birth of the notion that to live morally is to suppress one's instincts, to renounce one's desires, to weaken oneself in service of the concept of external good and external God, right? The true, the true tragedy lies in how deeply this subversion runs. The individual, in their attempts to live according to this moral code of the powerful, end up enslaving themselves, right? So, इंसान ने जब खुद ही एक्सेप्ट कर लिया अपना स्लेवरी, इन द प्रोसेस फिर उन्हें कंट्रोल करना आसान हो गया. दिस प्रोसेस ऑफ सबवर्टिंग नेचुरल मीनिंग has consequences that reach far beyond the individual. It becomes very foundation of social control. The bad conscience, once internalized, spreads like a virus across entire culture. Societies fueled by this guilt and shame begin to construct their laws, their traditions, their systems of punishment upon the premise that human instincts are inherently bad or useless, and they are something to be feared and repressed. The guilt does not arise from any inherent flaw in human nature, but from the external imposition of a moral framework that distorts our natural impulses and turns them against us. इस तरह से पूरा सोशल सिस्टम बन गया जो इंसान को इंसान बनने के लिए पनिश करने लगा. इस तरह से सोशल कंट्रोल कायम करना आसान हो गया, मॉब क्रिएट करना आसान हो गया, एक वियर्ड एब्सर्ड ट्रेडिशन क्रिएट करना आसान हो गया. Which tradition? A tradition which is not in coherence with human impulse and human inner feelings, but a culture, a tradition, a system that try to control human being by some external, by some imposition through creating an artificial external agent. And this imposition in the whole process, it led to sort of social control, and that led to distortion of natural impulses. एंड इस मतलब ये आई कैन जस्ट गो ऑन. यहाँ पे एक बुक को मैं कोट करना चाहूंगा. इट्स कॉल्ड मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बाय Foucault, I guess. So he's I think in the 20th century he was a very famous philosopher. तो उन्होंने एक इसको और आगे ले गया जहाँ पे दिखाया है कि जो लोग खुद के सुनते हैं, ये सोसाइटी उनको मैड बोलने लगा, पागल बोलने लगा. एंड इन द होल प्रोसेस जो खुद की बातें सुनते हैं, जिनका सेल्फ इम्पल्स स्ट्रांग है, उनको फिर एसाइलम में बंद करने लगा. ठीक है. सो द होल सिविलाइजेशन इन द प्रोसेस दैट गॉट क्रिएटेड बाय अब्राहमिक्स, it sort of captured the most innovative creative persons
and put them to asylum, right? So this is the extent to which Abrahamism has gone in order to kill spontaneous human spirit. ठीक है? अच्छा, तो अभी मैं जो डिस्कस किया वो है कि सबवर्जन ऑफ मीनिंग लेड टू बैड कॉन्शियंस. Fine. Now, I'm going to discuss something which is in the context of India, right? So I'm now coming back. Now, in the if you if you discuss the history of India, for example, since at least 1000 AD, you know that Bin Qasim came 712 AD, destroyed a bunch of temples and a bunch of towns, including Multan and Sindh. And then came the next big attack was by Mahmud Ghaznavi, 18 invasions from 1000 AD to 1028 AD, I guess. And he destroyed a large part of our North India, the temples, universities, cultures. ठीक है? Wealth, looted a huge amount of wealth. um, फिर दिल्ली सल्तनत आया, घुरी आया, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ, मुगल आए, ब्रिटिश आए, राइट? बीच में थोड़ा मराठा एम्पायर था, बट फॉर अ वेरी स्मॉल सॉर्ट ऑफ extent in time. So Hindus for a very large time, their culture got captured, right, by external Abrahamic powers, first by Islam and then by Christianity. And in the process, Hindus became dhimmi or zimmi. जिम्मी मतलब जो खुद का जो ध्यान नहीं रख सकता, जो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जिसका जिम्मा कोई और लेगा. कौन लेगा? स्टेट लेगा. विथ स्टेट, इधर शरिया स्टेट, इस्लामिक स्टेट और ब्रिटिश स्टेट. ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ये जो अब्राहमिक थियोलॉजी है, जो अब्राहमिक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय किया पहले. Now I'm going to discuss how it is going to destroy India and Hinduism of this land. ठीक है? Kind of like Sadat Hasan Manto's rebellion, what you did not understand. Right, right. Okay, so first I'm going to argue that GENOCIDED colonized or Zimmi state can never forge a true synthesis between freedom and rationality. Freedom and rationality, these are the one of the, I mean, the two most fundamental primal instinct within a man. Okay, and they are actually connected. But I'm going to argue here that colonized or Zimmi um, uh, sort of community, they can never forge a true synthesis between freedom and rationality, right? So I'm writing here. How would one recognize the colonized Zimmi state? The answer lies not in the external markers of oppression. कि बाहर से जो फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट है, क्रिश्चियनिटी है, वो तो अपना अलग तरीके से एट्रोसिटी चला रहा है. But that is the external marker, right? Um, we are going to find out something more subtle than that. The true mark of such a state is found in the distortion of its most sacred primal force, freedom. In a colonized Zimmi state, freedom and rationality are not bound together in their natural dynamic relationship. They are in fact divided, betrayed, and disfigured. The split is the very signature of a Zimmi state or a Dhimmi state, an artificial, stunted creature where freedom are compromised at every turn, often justified by the most elaborate, rationalized, and eschatological explanation. Eschatological explanation मतलब अंत में जो फाइनल डे ऑफ जजमेंट होगा, वहां पे क्या होगा, उस तरह का जो एक्सप्लेनेशन लाते हैं, जो एक एंड को रख देते हैं, एक एंड में एक यूटोपिया रख देते हैं, उसको थोड़ा बहुत एस्केटोलॉजी कहा जाता है.
The colonized state cannot by definition allow freedom to flourish, राइट. मतलब अगर इफ यू आर कॉलोनाइज्ड ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रीडम को तो बढ़ने नहीं दिया जाएगा. मतलब इंसान के दिमाग से फ्रीडम को हटा, तो फ्रीडम विल बी सॉर्ट ऑफ kept aloof from the whole sort of zimmi colonized community. It is a product of compromise with its own identity. ये समझाएंगे कि मैं तो तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ, राइट. तुम जिम्मी हो, मैं तुम्हारा जिम्मा ले रहा हूँ, बाहर से कोई अगर अटैक करे उससे तुमको बचा रहा हूँ. So I should have the freedom to everything, freedom to express, freedom to violence, freedom to propagate my religion, right? The state, the very Sharia state or the Christian state, it takes the control of all these things. And in such a state, rationality is not a tool for emancipation. It is a tool for continued submission. इस स्टेट में अगर कोई धिम्मी आ गया, जैसे हिंदू धिम्मी बने थे, वहां पे हिंदू, एक आम हिंदू क्या सोचेगा कि मैं तो सेफ हूं ना इसके अंडर. सो द ओनली रैशनल थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ इज सब, लाइक आई शुड सबमिट टू द स्टेट क्योंकि ये मुझे बचा रहा है. The colonized state and Zimmi state becomes adept at manufacturing rational explanations, logical anticipations, and gloomy eschatological logical predictions to explain away its stunted growth. जैसे नेहरू बोल रहा था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब इकोनॉमी पोस्ट 1947 जीडीपी ढंग से बढ़ नहीं रहा है क्योंकि हम लोग हिंदू हैं. तो हिंदू भी मान लिया, हाँ यार, दिस इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, दिस स्टंटेड ग्रोथ. बट हिंदूज फाउंड सम वियर्ड रैशनल लॉजिकल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि हाँ जो नेहरू बोल रहा है वो सही है. बिकॉज इंडिया वॉज अ धिम्मी स्टेट, राइट, एंड स्टिल इज टू सम एक्सटेंट. These excuses, these rationalized compromises, prevent the spirit of the people from bursting forth in full, uncontested glory. And in doing so, the very essence of freedom, spontaneous, bold, untamed, is suffocated. The wild potential of a people's imagination, their will, their spirit, is throttled by the thick chains of rationalized surrender. It is precisely here that eschatology becomes the secret weapon of the colonizer, wielded with calculated finesse. Through the promise that a distant mythical redemption, whether spiritual or political, the colonized state convinces its people that the future will solve the injustices of the present. कि कोई शरिया स्टेट हो या ब्रिटिश स्टेट हो, वो समझाएंगे कि इन मतलब इन द एंड सब कुछ सही हो जाएगा. तुम्हें अब चुप रहना है क्योंकि तुम अगर रिबेल करोगे स्टेट के अगेंस्ट तो वो थोड़ा कियोस क्रिएट करेगा और समाज टूट जाएगा एंड व्हाट नॉट और वट एवर, लोग मरेंगे. तो इससे अच्छा है कि यू स्टे सबड्यूड. और सारे लोग अगर सबड्यूड हो गए, सारे लोग अगर सबमिसिव हो गए टुवर्ड्स द स्टेट, then then the perfect peace will be attained, right? And British also said the same thing कि we have come to civilize you, कि India civilized नहीं है. So in the end the whole India will be civilized and then we'll live, मतलब then we won't be having any task, so we will leave India. ठीक है. So this eschatological sort of dream, the utopia, the final resolution, the idea of a grand final resolution becomes the opium that dulls the sharp edge of urgency. The people are taught to wait, to bide their time, to endure the present in silence, for the promised end times will restore what has been lost. This eschatological vision acts as a tool of pacification, making the people believe that their freedom, their very existence, can only be realized in a far off, idealized future. In this state of perpetual waiting, the people's voice is silenced. The tongue of the race is slit, not by the blade of force, but by the fatal seduction of hope. Hope for a future that never arrives. इंडिया अभी पूरा सिविलाइज हो गया है क्या? वेस्ट के नजर में नहीं हुआ. इंडिया में पूरा पीस आ गया क्या? अमन आ गया क्या इस्लाम के हिसाब से? उनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि दिस इज अ दारुल हार्ब, दिस इज अ हाउस ऑफ वॉर. इंडिया एक जंग की जगह है.
तो वो जो फ्यूचर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी ने सॉर्ट ऑफ इन्विजन कराया था, वो ना कभी आने वाला था ना कभी आने वाला है। बट वो जो समझा रहे थे, हिंदू कुछ हद तक उसे मान रहे थे, एंड इन द होल प्रोसेस ये जो इंडिया का ग्रोथ है वो स्टंटेड हो गया, जो स्पिरिट है वो सबड्यूड हो गया, और हम लोगों ने फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एंड इन द होल प्रोसेस वी फॉरगॉट टू फोर्ज अ ट्रू सिंथेसिस बिटवीन फ्रीडम एंड रैशनलिटी। हम लोगों में स्थविरता आ गया, हम लोगों में स्टैसिस आ गया, and some sort of we lost our rationality, we lost our freedom, and we lost the sense and the knowledge of how to synthesize freedom and rationality together. ठीक है, so मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। In the process we can take some question and then जो next step है, I think this is getting heavier No, no, but no. final front It's पे हम लोग it's आ गए। it's fine, fine, fine. Yeah, you take water. We'll take Sure, a few questions. I think. Let me मैं हूँ, see. मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो ऑफ Okay, करना। okay. Yeah, yeah. No, no issues, no issues. So, M. Shastri had a good point. Let me just read. Yeah. So, M. Shastri had a comment. We also need to start defining dharma in terms of uh, okay, swadharma or a raj-dharma. So, swadharma, that's the interesting part. The raj-dharma and swadharma. So, like in the modern context, we see correct a secular state. Okay, but secularism is a kind of a byproduct of Abrahamism. Okay, because secularism came about because of the oppression which was perpetrated by the Abrahamic state itself, church, for instance. So, in terms of the million-year civilization that Bharat is, the concept of secularism does not exist anymore. It never existed. It has still now doesn't exist. Okay, so that's why we need to define the state itself, the state or Rajya itself, in terms of Swadharma and Rajadharma, and that we used to see. If you remember that when the Godhra riots took place, okay, Mr. Atal Bihari Vajpayee told Mr. Modi that okay, follow your Rajadharma. So that is the ancient tradition of Bharat, the dharmic tradition of statecraft. That's called Rajadharma. And Swadharma is generally individual driven. Okay, individuals' action. Vijita, do you have any comment on this? Right. I mean, धर्मा का I think we can have another. मैंने धर्मा को भी थोड़ा डिफाइन किया है एक अलग तरीके से। अलग तो मतलब No, ये जो no, डिस्कशन चल रहा है इसको कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा उस हिसाब से, मेरे हिसाब से धर्मा वो है कि जैसे सो देयर आर सम नेचुरल ऑर्डर्स, राइट, एंड आई थिंक ओवरऑल सनातन को ऐसे ही डिफाइन किया गया। no, no. तो He's talking about Swadharma and Rajdharma. So राइट, वो तो ऑब्वियसली वहीं से निकलता है, धर्मा से निकलता है। इट्स नॉट लाइक कि सम दे आर इन कॉन्ट्रास्ट और दे आर समथिंग इन बाइनरी। इट्स जस्ट दैट कि धर्मा इज अ जेन्युइन बीइंग in appearance, ठीक है, which basically mean कि let's say when you talk about physics for example, right, तो we know कि physics में scalability है, which means कि अलग अलग स्केल पे जाओ तो apparently दिखता है कि अलग अलग लॉ काम कर रहे हैं। मतलब क्लासिकली इस दुनिया पे हम लोगों को दिखता है कि न्यूटन्स लॉ इज वर्किंग, राइट, देन 10⁻⁶ पे 6 मीटर पे जाओ, वहां पे मेसोस्कोपिक फिजिक्स ब्राउनियन मोशन आ जाता है। फिर 10⁻⁹ 10⁻10 मीटर पे जाओ, वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है। 10⁻15 18 पे जाओ तो उसमें रिलेटिविटी प्लस क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम फील्ड थियोरेटिकल कॉन्स्टेंट, व्हिच मीन कि अलग अलग स्केल पे ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग लॉ काम कर रहा है, राइट, बट when you try to accumulate and aggregate these smaller degrees of freedom, मतलब जैसे 10⁻18 पे जितना पार्टिकल है उसको अगर एग्रीगेट करके मतलब उसको कोर्स ग्रेनिंग बोलते हैं, एग्रीगेट करना चालू करो तो
10⁻⁹ वाला लॉ मिलेगा। 10⁻⁹ में जो पार्टिकल्स है उसको एग्रीगेट करना चालू करो, फिर मेसोस्कोपिक फिजिक्स मिलेगा। उसको एग्रीगेट करो तो न्यूटन्स लॉ मिलेगा। तो हमारे लिए वो थोड़ा एनोमलस लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल्ट्जमैन लॉ हो गया है, पीवी इक्वल्स एनआरटी। ना यू नो कि इतने सारे पार्टिकल्स है, राइट? मतलब इस रूम में मान लो कितना बड़ा रूम है, इट्स लाइक ओके वट एवर 10 फीट बाई 10 फीट। तो यहाँ पे 2 मीटर, हाँ मतलब इसमें मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻25। ठीक है, 10⁻25 नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। वो अलग अलग हिसाब से अपना काम कर रहा है, बट थ्रू मतलब ये जो ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसको अगर एग्रीगेट कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हें मिलेगा पीवी इक्वल्स एनआरटी, जो आइडियल गैस लॉ है। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। तो विच मीन्स कि ऑब्वियसली एक स्केलेबिलिटी दिखता है हमें, कि नेचुरल लॉ का स्केलेबिलिटी है, बट दे आर इन कोहेरेंस विथ ईच अदर। इसी तरह से मान लीजिए किसी के अंदर कुछ हो रहा है, whatever thoughts and consciousness and conscience and everything which is at work, that is being behind appearance। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो दिख रहा है, उसके हिसाब से वो तो पीछे है थोड़ा। उसके बाद मेरा एक फेस है, एंड आई एम सेइंग समथिंग एंड आई एम एक्टिंग एज अ मोरल एजेंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज अ जेन्युइन बीइंग इन अपीयरेंस। मतलब जो बीइंग बिहाइंड अपीयरेंस है, उसको अगर सम अप कर दोगे थ्रू सम थ्रू नेचुरल ऑर्डर, उसको सम अप करके तुम्हें जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, जो जेन्युइन बीइंग इन अपीयरेंस मिलता है, मैं उसे धर्मा बोलता हूँ। उस हिसाब से तुम स्वधर्म बोल दो, राजधर्म बोल दो, वो मिलता रहेगा। राजधर्म ऑब्वियसली, मतलब राजधर्म जैसे मनुस्मृति में तो बहुत सुंदर हिसाब से राजा के बारे में लिखा गया है, उसका कर्म क्या होना चाहिए। उसको भी उसी तरह मनुस्मृति डिराइव किया गया है, कि एक कॉस्मिक ऑर्डर है, उसके बाद तुम्हारे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर एक राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो या आई थिंक दिस इज माय explanation Okay. to this question. Yeah. So continue and finish your part. Then we will take some questions. Sure. So now, so अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो है कि colonized dhimmi state can never forge a true synthesis between freedom and morality। जो हिंदू ने वो हिंदूनेस लूज कर दिया, जहाँ पे वो स्वराज को और रैशनलिटी को ढंग से सिंथेसाइज कर सके। तो यहाँ से एक फियर ग्रो हुआ। ठीक है, जैसे अब्राहमिक लोगों के बीच फियर होता है ऑफ गॉड, यहाँ पे एक अलग तरह का फियर हिंदू माइंड में ग्रो हुआ। तो वी नो कि इन हिंदू स्क्रिप्चर वी टॉक अबाउट immortality of Atman and everything, right? Now, here I'm going to argue that Hindus strive for immortality together with his fear for the GENOCIDAL, Ganahatya extinction, right? Sarbic extinction. So Hindus strive for immortality together with his fear for the Sarbic extinction, wholesome extinction by the Abrahamics, have shaped up the modern Zimmi Indian state. तो यहाँ पे मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये जो फियर एक ग्रो हुआ, वो उसके साथ हिंदू का जो पुराना प्राचीन जो और कंटिन्यूइंग जो डिजायर और आइडिया था अबाउट इमोर्टलिटी, ये जब सिंथेसाइज हुआ, उसके थ्रू जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एक धिम्मी इंडियन स्टेट बना। ओके, सो हियर आई राइट, it is here that we must confront the most terrible truth. The eternal strives of the Hindu man for immortality, the desire to remain rooted in the soil of Bharatvarsha, to never be extinguished from the land or from the consciousness of the world, has itself been weaponized against him. Simultaneously, in the Hindu mind, the fear of annihilation at the hand of the Abrahamics has always been present. A fear of being wiped off the earth, a fear of being relegated to oblivion, to the status of a mere memory, okay, to the status of a showpiece in a museum. The Hindus' mental struggle against this fear of extinction. तो एक तरफ है कि ओके वी आर इमोर्टल, राइट, हम लोग इमोर्टल रहेंगे,
दूसरी तरफ है यार एज ए रेस तो हम लोग खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब्राहमिक समय खत्म कर देंगे, कि 1000 साल से तो यही करते आए हैं। ये जो दो एक्सट्रीम एंड है, राइट, Hindus needed to synthesize this. Okay, they needed to sort of make sense of both of them, and in the process, right, Hindus have gone through a mental struggle against this fear of extinction, and it has become a paradox that both sustains and destroys. तो एक तरफ तो इमोर्टलिटी है कि हम लोग रह जाएंगे, एक तरफ तो है कि यार हमें खत्म कर दिया जाएगा, तो एक सस्टेनेंस भी है, एक फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है। दिस फियर पेयर्ड विथ yearning for continuity has shaped the culture, the psyche, and the modern identity of Hindus. It has cultivated a nation of dhimmis, a people forever compromised, forever in a state of servitude, forever willing to bend under the weight of external demands. The state of being, the synthesis of fear and survival, has created a spiritual paralysis, a mental cripple that cannot imagine itself here. तो हिंदू के अंदर जब डर आया और हिंदू पता था कि हम तो इमोर्टल रहेंगे, तो इससे एक फिजिकल वर्ल्ड में एक सेंस ऑफ सर्विट्यूड आया कि मुस्लिम जमाने में दे सॉर्ट ऑफ एक भक्तिवाद आया, राइट। भक्तिवाद किस तरह से आया कि ठीक है, जो राजा जो कर रहा है करने दो, वो तो अत्याचारी है ही, बट हम लोग एक पाथ चुनते हैं भक्ति को, ठीक है, तो हम लोग राजा का क्रिटिक नहीं करेंगे, बट हम लोग जो स्पिरिचुअल जो हमारा बिलीफ है इसको थोड़ा प्रोपेगेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसका बहुत अच्छा हमें फल मिला, ठीक है। इंडिया का एक लार्ज पोर्शन उन्हें एक नैरेटिव मिला, वो पूरा डिस्ट्रक्शन से बच गया, तो इसलिए नॉर्थ इंडिया उस हिसाब से इतना कन्वर्ट नहीं हो पाया। एंड दिस वाज द सॉर्ट ऑफ रूटेड response, although from a sense of servitude to the mighty power of the Delhi Sultanate and the Mughals, right? तो एक तरफ से जो युद्ध था वो तो चल ही रहा था, बट एक तरफ भक्तिवाद आके रैम्पेंट कन्वर्शन थी, इंडिया को बचाया, ठीक है। बट उसके साथ एक फियर भी आया कि यार ये तो कन्वर्ट किया जा रहा है हमें, सो प्रोबेबली वी विल बिकम एक्सटिंक्ट, तो हमें कुछ हिसाब से मुहायदा बनाना होगा, राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। So the Hindu man is caught in an eternal cycle of mutually conflicting duality, a perpetual struggle between the urge to preserve his identity and the nagging realization that he must compromise with forces beyond his control. कि ये जो राजा है इसको तो परास्त नहीं कर सकते, तो एक कुछ हद तक ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। दिस सिंथेसिस इज टेरिबल, डिफीटिस्ट एंड अल्टीमेटली यूजलेस, and here lies the deepest tragedy. This constant synthesis between the fear and survival has constructed the modern state of Bharat as it is today. It has created a culture in which the mind of the Hindu is confined, trapped, forever looking back on past losses, forever looking forward to a mythical future. The struggle for freedom is distorted by the weight of history and eschatology, leaving the people of India shackled by their own fears and a misguided sense of hope. ठीक है कि ठीक है, हम लोग इमोर्टल रहेंगे बट हम लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इस दुनिया से। तो पीछे भी थे, और पीछे क्या क्या लॉस हुआ कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, तो पीछे भी देखना पड़ रहा है, आगे भी एक होपफुल फ्यूचर जो एज्यूम करना पड़ रहा है, विच इज ऑल्सो अगेंस्ट द फिजिकल रियलिटी कि यहाँ दुनिया इंडिया पे इतना कन्वर्जन चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल है, वट एवर। इससे एक जो मतलब इट्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कि मुझे फ्री होना चाहिए कि नहीं, इस ये क्वेश्चन पे आ जाता है। एंड सो इट इज डिस्टॉर्टेड बाय द वेरी वेट ऑफ हिस्ट्री एंड एस्केटोलॉजी, leaving the people of India shackled by their own fears and a misguided sense of hope. But the time has come for the Hindu mind to move beyond this fatal synthesis and forge a new equilibrium, right? तो ये तो बात है कि हमें क्या क्या करना है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या सेटअप करना है, बट this is what has happened to us. Our strive for immortality, together with our fear for the wholesome extinction, it has shaped up our psyche and the psyche of this dhimmi Indian state, where Hindus are majority, right? Okay, so now that Hindus become a little afraid,
they reached a contract, right, which is probably secularism, which is so much unlike European secularism. क्योंकि यूरोपियन सेकुलरिज्म में रिलीजियन और स्टेट को बिल्कुल ही अलग रखा जाता है, एंड देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, क्योंकि उनका जो मतलब ये जो अब्राहमिक रिलीजियंस है, दे आर टोटल रिलीजियंस, दे बिलीव इन टोटलिटेरियनिज्म, कि तुम्हें 6 साल की उम्र से तुम्हें इंडोक्ट्रिनेट किया जाएगा, तुम्हें चर्च आके तुम्हें जो भी तुम्हारा फेस्टिवल्स है ये उसमें पूरा राज करेगा, तुम्हारा माइंड कैप्चर कर लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी कैप्चर किया जाएगा, सोसाइटी में सिर्फ पोप का राज होगा, उसके बियॉन्ड कोई कुछ बात नहीं कर सकता। तो ये जो टोटल कंट्रोल होता था एक चर्च का, और इससे थोड़ा बहुत इधर उधर गए तो खत्म हो जाते हो विथ द एटाविज्म, कि जो पहले बाइबल में या व्हाटएवर कुरान में लिखा गया उसी हिसाब से चलाना है सोसाइटी को। ये जो सेंस ऑफ एटाविज्म है, इससे जो जो सोसाइटी निकल रहा था, इट वाज अ वेरी मच फंडामेंटलिस्ट एंड ब्लाइंड सोसाइटी, राइट, जहाँ पे कोई न्यू आइडिया का कोई जगह नहीं था। नाउ इससे यूरोप को निकलना था, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो स्टेट है उन पे रिलीजन का कोई दखल नहीं चाहिए, ठीक है, रिलीजन की जगह रहेगा, वो चर्च के अंदर रहेगा, हम लोग जाएंगे जो भी वर्शिप करना है करेंगे, बट इज नॉट गोइंग टू कम टू रूल एंड डिक्टेट अस कि क्या करना चाहिए, युद्ध कैसे लड़ना चाहिए, किन के नाम पे लड़ना चाहिए, कौन सा फ्लैग यूज करना चाहिए, एजुकेशन में कैसे एजुकेशन देना चाहिए, ये सब में मुझे रिलीजन का दखल नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीजन वाज कमिंग इन द वे ऑफ एनलाइटनमेंट, तो इन्होंने रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में कि ये जो डर था कि एक फियर ऑफ एक्सटिंक्शन एंड ऑल्सो क्रेव फॉर इमोर्टलिटी, इसके लिए हिंदुओं ने एक सॉर्ट ऑफ, जब कांग्रेस या ओवरऑल जो एक डीप स्टेट था, इन्होंने जब सेकुलरिज्म इम्पोज किया कि हम लोग सब रिलीजन को कोट अनकोट पहले तो हिंदू को रिलीजन बोला गया, उसके बाद ये थोपा गया कि सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, right? So, and in this process, it is secularism that started to manufacture resentment. अब वो जो resentment, अब्राहमिक resentment था, वो हिंदुओं के अंदर धीरे धीरे आने लगा, and now I am going to explain how. So here I am writing a very, I don't know, provocative sentence, which is that secularism of India is an asexual bitch who engages in meaningless promiscuity with Occidental values only to seek foreign validation. कि इनको एक promiscuity चाहिए, इनको बस यूरोप में कुछ दिखाना है, यूरोप कैसे चल रहा है उसके हिसाब से हमें खुद को चलाना है। तो ये जो कॉन्स्टेंटली दूसरे की तरफ देखना और जो ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न वैल्यूज है उसके साथ मीनिंगलेस नहीं, मतलब सो जाना एक हिसाब से, वो इंडिया के जो सेकुलरिज्म है उसको डिफाइन करता है। whoever is not practicing secularism is committing a sin by running this propaganda incessantly. The Indian state creates within a Hindu mind a bad conscience, a sense of guilt, a form of cruelty detected in all. राइट, कि तुम हिंदू हो तो तुम मतलब सेकुलर नहीं हो, तुम अगर सेकुलर नहीं हो तो तुम एक मतलब इन द आईज ऑफ द स्टेट यू आर कमिटिंग ए सिन। तो ये कॉन्स्टेंटली बोल बोल के हिंदुओं के अंदर इंडियन स्टेट इज क्रिएटिंग a bad conscience, a sense of guilt, a form of cruelty directed inward. Through this process, Hindus get constantly kicked and whipped by the system until one day he wakes up and decides to give up his Hindu qualities, which are spontaneity, festivity, attainment of higher self through passionate thoughts and deeds. तो इतना व्हिप करता है ये बात को लेके कि मूवी में हिंदुत्व नहीं दिखा सकते, कॉलेज में टीका पहन के नहीं जा सकते, सरस्वती पूजा स्कूल में नहीं हो सकता, ये कर करके हिंदुओं को इतना व्हिप करता है कि वन फाइन मॉर्निंग हिंदू वेक्स अप और वो बोलता है भाई ये जो मेरे अंदर स्पॉन्टिनिटी है, मेरे अंदर जो सेंस ऑफ फेस्टिविटी है, मेरे अंदर जो अटेनमेंट ऑफ हायर सेल्फ थ्रू कर्मा है, ये मुझे सब कुछ मुझे अबंडन करना होगा क्योंकि मेरे लिए सिस्टम बना ही नहीं है। He is constantly reminded of his sins that he and his ancestors might have done in his civilizational past. कि तुमने ये किया, जातिवाद किया, तुमने पता नहीं दलितों का ये किया वो किया, ये करके जो जबकि ये जो जाति वाला आइडिया 1850s में आया, राइट,
उससे पहले एक हायरार्किकल सोसाइटी था, बट इट वाज नॉट लाइक कि एक लोग दूसरे लोगों को खत्म कर रहा है, राइट? इनफैक्ट वी हैव सीन इन द हिस्ट्री कि सारे जातियों के लोग एक साथ खड़े हुए हैं ड्यूरिंग इस्लामिक इन्वेजन, ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन दिस लैंड। तो एक साथ खड़े हुए, इट इम्प्लाइज कि भाई सब लोग एक साथ थे। ऑब्वियसली देयर वर वेरियस ड्यूटीज दैट दे वर परफॉर्मिंग, but in some extent they were together, and in most of the occasions they were together. Nevertheless, Hindu is constantly reminded nowadays that he and his ancestors might have done some sin, some wrong deeds in the past, and then he is offered suffering as some kind of reward, along with the perpetual promise of the state to exculpate him from all his civilizational sins, given he suffers now and he suffers a little more. कि ये बोला जाता है कि ओके, पहले जो हो गया, बट अभी तुम सेकुलर बन जाओ, अभी तुम पता नहीं, ये जो तुम्हारा जो पुराना सिस्टम है उसको तुम त्याग दो कुछ हिसाब से, ठीक है? तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो सरनेम है, वो तुम त्याग दो, ठीक है? और तुम यू ऑल्सो फील अशेम्ड बाय द वे कि पहले जो हुआ है उसके लिए थोड़ा सफर करो, ठीक है? और मैं तुम्हें इससे निकाल दूंगा, ये जो तुम्हारा सेट है इससे तुम्हें निकाल दूंगा, बट तुम्हें अभी थोड़ा सफर करना होगा, कुछ दिनों तक सफर करना होगा, जब तक मतलब ये जो भी इंडिया में डाइवर्सिटी है वो खत्म नहीं हो जाता। A Hindu, thus, like a hen, gets imprisoned by a chalk line drawn by the very Indian state, which in his thought he himself elects and seeks protection from for his sustenance and survival. तो एक स्टेट है जो सरकार हम लोग बना रहे हैं, वही एक बंगाल में गोंडी बोलते हैं ना, एक चॉक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अराउंड यू कि इसके बाहर तुम्हें नहीं जाना है। The state, in response, gradually deinstitutionalizes them, then invalidates him, then declares him a sinner and a criminal to send him to an eternal guilt trip from which he never recovers, right? कि यार तुम तो जातिवादी हो, तुम्हें इस सरकार में तो तुम जगह नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें इनवैलिडेट कर देता हूँ मैं, तुम्हें कैंसिल कर देता हूँ, तुम एक सीनर हो, पापी हो, तुम क्रिमिनल हो तुम। और इस तरह से गिल्ट ट्रिप में हिंदुओं को भेज देते हैं। Slowly then, with the legal, financial and other kind of assistance from the very Indian state, appears the Abrahamic priestly class, the Ashrafs and the Padris, with their religious opium and many other cult narcotics, to take advantage of this guilt trip of a Hindu, gradually besieging the consciousness of the Hindu society and finally relegate Hindus to an inferior position in their own nation. अब मतलब विद द असिस्टेंस ऑफ द इंडियन स्टेट, जो सेकुलर स्टेट है, विद द असिस्टेंस ऑफ द वेरी स्टेट, पादरी और अशराफ और ये पूरे सिनेरियो में घुसने लगते हैं विद द रिलीजियस ओपियम, अलग अलग ओपियम की किसी को बुखार आया तो जीसस ने सही कर दिया, या फिर इस्लाम इज अ लिबरेटिंग फोर्स तो इस्लाम कबूल कर लो, राइट? And many other cult narcotics to take advantage of this guilt trip of a Hindu. हिंदू ऑलरेडी गिल्ट ट्रिप में चल रहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ तो शर्म आनी चाहिए मुझे। वहां पे अब पादरी और ये अशराफ घुस जाते हैं और फिर जो हिंदू सोसाइटी का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको तोड़ के धीरे धीरे जो इंडिविजुअल जो कॉन्शियंस या ये सब है, चैतन्य है, उसको उसको ग्रास करते हैं। फाइनली रेलीगेट हिंदूज टू एन इंफीरियर पोजिशन इन देयर ओन नेशन। Hindus do not understand what is good for them because they are eternal sinners. Hindus do not know how to govern, hence, they should not take up the responsibilities to rule the nation. Hindus do not know how to run their temples, hence, their temples must be seized. Hindus do not know how to grow crops, and the world anyway belongs to Allah and Allah alone. Hence, the land in India behoves to be captured by the Waqf. So the Indian state, with the Abrahamic priestly class, starts to overwhelm Hindus with these kind of waves and waves of attacks. ठीक है कि भाई तुम्हें तो समझ में नहीं आता, तुम तो इटर्नल सिनर हो, बुद्धू हो, तुम्हें पता नहीं कि कैसे गवर्न करना है, तो तुम्हें तो ये नेशन चलाने में तुम्हें आना नहीं चाहिए, जो अंग्रेजों का लॉजिक था। हिंदूज डू नॉट नो हाउ टू रन देयर टेम्पल्स, तो कैप्चर कर लेते हैं, सरकार कैप्चर कर लेगा टेम्पल।
तुम्हें देगा भी नहीं, मतलब अगर कोई दक्षिणा भी दे तो पंडित को उठा ले जाएगा। हिंदुओं का तो लैंड नहीं है, लैंड तो अल्लाह का है। तो वक्फ बोर्ड बनाओ और हिंदुओं का लैंड कैप्चर करो। और इसमें इंडियन स्टेट लॉ बना देता है ऊपर से, ठीक है। और इंडियन स्टेट और अब्राहमिक जो प्रीस्टली क्लास है, दे ओवरवेलम हिंदूज with these waves and waves of attacks. Through this process, gradually Hindu starts to lose his own piece of past, his own piece of history, his own piece of geography, his own piece of ecosystem, spiritual, political understanding, and everything, science, literature, his own ocean, his governance, allies, neighbors, anything and everything that a race needs to survive happily and healthily in this planet. हिंदू धीरे धीरे सब कुछ खोने लगता है, वो सब चीजें कैप्चर होने लगता है, ओशन हो जाए, गवर्नेंस हो जाए, पड़ोसी हो जाए, सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, स्पिरिचुअलिटी हो जाए, वो अब्राहमिज्म धीरे धीरे कब्जा करने लगता है। This process is doubly devious since this perpetual loss at the hand of Abrahamics, along with the out and out religious conversion by the Abrahamics into their own respective cultish folds, gradually engenders deepest resentment in the heart of a Hindu. अब जो होता है एक स्पॉन्टेनियस जो हिंदू एक 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 चैतन्य है, एक हिंदू माइंड है, which believes in moral spontaneity, right? Because he believes in cosmic order, so he listen to his inner calling. उसके अंदर resentment आने लगता है, resentment about Hinduism, and also resentment to some extent against these Abrahamic cults and their followers, right? अब जब एक हिंदू के अंदर ये एक रिजेंटमेंट आ गया, and this resentment, oh, something that the Abrahamic cults have mastered over 1,000 of years, internalized it and elevated it to the level of art and spirituality within their own society, something that a Hindu can never beat them at. रिजेंटमेंट एक ऐसा क्वालिटी है जो अब्राहमिज्म ने बिल्कुल इंटरनलाइज कर दिया है, उन्होंने इसको एलिवेट कर दिया टू द लेवल ऑफ आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। रिजेंटमेंट ड्राइव करता है अब्राहमिज्म को। सो ऑब्वियसली अगर हिंदू के अंदर रिजेंटमेंट आ गया तो आउट ऑफ रिजेंटमेंट वो जो एक्शन लेगा और जो जिस हिसाब से सोचेगा इन हिज थॉट एंड इन हिज डीड्स, ही कैन नेवर बीट एन अब्राहमिक पर्सन, ठीक है। अ हिंदू विद दिस रिजेंटमेंट इन हिज कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड implanted by the Indian state, stays no more a Hindu, for he has now believed, accepted an inferior guna. In fact, the most inferior and one of the most fundamental of all heen gunas, which is resentment. So, you see, we have the six enemies, Hodoripu, right? Kam, Krodh, Mat, Lobh, Moha, Matsarya. But these six can further be unified into two basic sort of enemy, internal enemy, greed and resentment. ठीक है, थोड़ा सोचना तो शायद you will agree with me. So greed and resentment are the most fundamental हीन गुनास, ठीक है। तो ग्रीड तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे रिजेंटमेंट, एक हिंदू के अंदर अगर रिजेंटमेंट आ गया तो एक एक अंदर से एक इंफीरियर गुना को, हीन गुण को एक sort of मान्यता दे दिया, ठीक है। This begins his slow gradual journey, albeit unconsciously, towards Abrahamism. This very transition of a Hindu from being free and spontaneous to being a resentful, sick, self-guilted animal makes him a sinner in his own eyes and opens the floodgate of religious conversion. ठीक है, हिंदू अगर रिजेंटफुल हो गया, हिंदू अगर सिख हो गया, सेल्फ गिल्टेड हो गया, तब एक अब्राहमिक डॉक्ट्रिन को उसके लिए आसान होता है एक हिंदू को कन्वर्ट करना। सो इन द होल प्रोसेस दिस सेकुलरिज्म ड्राइव्स अ हिंदू टुवर्ड्स रिजेंटमेंट व्हिच ओपन द फ्लडगेट ऑफ रिलीजियस कन्वर्शन, ठीक है। तो तो ये हो गया कि सेकुलरिज्म मैन्युफैक्चरिंग रिजेंटमेंट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा था कि हाँ,
import intention morality like secularism that Hindus could accept as a principle of this land. ठीक है, तो रिजनमेंट तो आ ही गया है ऑलरेडी, फियर एक है ऑफ एक्सटिंक्शन. नाउ जो इंडियन स्टेट है, तो अभी तो एक स्प्लिट क्रिएट हो गया हिंदू के अंदर, राइट, कि हिंदू जैसा है और हिंदू जो बनने की कोशिश कर रहा है वो दोनों अलग है. तो इसमें इंडियन स्टेट का हाथ है, राइट. और ये जो गैप है, दिस इज बीइंग वाइडेंड बाय द अब्राहमिक्स. नाउ जो इंडियन स्टेट है, इट इम्पोजेस एन इंटेंशन मोरालिटी. ठीक है, इंटेंशन मोरालिटी मतलब बंगाली में तो धांधाबाजी कहते हैं. एंड व्हेन आई से धांधाबाजी, एवरीवन अंडरस्टैंड कि क्या होता है. बट इंटेंशन मोरालिटी इज, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट एक मोरालिटी फ्रेम करता है जिसका एक धंधा होता है, मतलब एक बाहर का एक एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ एंड होता है, एक गोल होता है, जो शायद इस एजेंट को नहीं पता है, बट जो एक्सटर्नल पार्टी है वो इम्पोज कर रहे है उसको पता है. और उसके हिसाब से अगर इंडिविजुअल जो मोरालिटी है उसको मैनिपुलेट करने लगता है, तो दिस मैनिपुलेटेड मोरालिटी इज is sort of it is something that we call intention morality. And now I'm going to prove that now Indian state imposes an intention morality which is secularism in the mind of a Hindu. So Indian secularism is the biggest example of intention morality. The state of India uses secularism as a dog leash to control Hindus, to get Hindus to do what it wants. The anomaly here is that it should be the state and not the people who have the burden of being secular. लोगों को क्यों secular बनना है? लोग तो स्टेट तो प्रॉमिस किया है ना, एक हिंदू हिंदू रह सकता है, स्टेट सेकुलर रहेगा. बट नाउ द स्टेट इज आस्किंग समथिंग मोर. ही इज सेइंग कि एक हिंदू को सेकुलर बनना पड़ेगा, राइट. सो ओके, नाउ the anomaly here is that it should be the state and not the people who have the burden of being secular, of separating the government from religions, because in India it is Hindus whom the state expects to practice secularism at the cost of being discriminated against through almost all public policies, budget, finances, opportunities, rights, legislation, and whatnot. The state of India thus uses morality to assume power. The very state that has all the power and all the arms and ammunition to govern Hindus, to rule over Hindus, and to deny and decry Hindus of their legitimate rights on this land, plays the victim here. And that too, a victim with some kind of a weirdly higher moral ground than Hindus. It is Hindus who have been perpetually taken advantage of. But as per the state, who is the victim? The state itself. And then, because as per the common perception, taking advantage of someone is a crime, Hindus are committing crime to the state and in this land if and when they are being communal, in the sense of thinking of doing betterment of their own community. Yes, the state of India believes that Hindus working for the upliftment of the various Hindu communities is a criminal act, because Hindus taking care of Hindus talking about Hindutva and Hindu upliftment is communal. And thus, any such effort needs to be curbed and beaten harshly with a stick. Once this criminality, ipso facto, of Hindus is established, the state takes the moral duty and sacred responsibility to reform the Hindus and their cultures, their customs and traditions. Here comes the mullahs, Marxists, and missionaries with their vile conversion agendas. Right? कि स्टेट बोल रहा है कि मैं तो विक्टिम हूं, तुम हिंदू हो, तुम अब हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हो, तो द स्टेट इज इन डेंजर, right? The communal harmony is in danger. The judiciary is in danger. Legislation, parliament, everything is danger. कि आग लगा रहे हो. हिंदू अगर हिंदू बन रहा है तो इस देश में आग लग रहा है. ठीक है, हिंदू को तुम मांग रहे हो कि राम जन्मभूमि तुम्हारा होना चाहिए. ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. तो तुम जो मांग रहे हो एज ए हिंदू, तुम्हारे जो हिंदू डिमांड है उसके लिए तुम क्रिमिनल हो, तुम काफिर हो सेकुलरिज्म के नजर में. ठीक है, तो मैं विक्टिम हूं. स्टेट बोल रहा है कि मैं विक्टिम हूं, तुम लोग हिंदू होने की वजह से तुम मुझे रौंद रहे हो, स्टेट को रौंद रहे हो. द स्टेट व्हिच हैज दिस इन्फिनिट कैपेसिटी टू परपिट्रेट वायलेंस ऑन हिंदूज, वो क्लेम कर रहे हैं कि स्टेट विक्टिम है.
और परपिट्रेटर हिंदू है, और तब फिर बोल रहा है कि नाउ इट इज माई मोरल ड्यूटी, स्टेट बोल रहा है, एंड इट इज माई सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफॉर्म यू। एक मिनट। ठीक है, तो इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफॉर्म द हिंदूज एंड हिंदू कल्चर्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तुम मतलब तुम्हारा औकात क्या है कि तुम स्कूल में तुम सरस्वती पूजा करोगे? तुम्हारा औकात ये नहीं है, तुम ये करके इंडियन कल्चर बिगाड़ रहे हो। तुम अगर स्कूल में सरस्वती पूजा करोगे तो उससे कम्युनल हार्मोनी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो तुम कावड़ यात्रा निकालोगे तो उसके थ्रू कम्युनल टेंशन क्रिएट होगा, तो तुम काफिर हो, तुम क्रिमिनल हो, क्योंकि तुम हिंदू हो और तुम अपने हिंदूनेस में यकीन रख रहे हो। फिर इसको पकड़ के मुल्लाज मार्क्सिस्ट मिशनरी आ जाते हैं। Moreover, the status of secularism very deceivingly has been elevated to a level beyond the reach of law. मतलब सेकुलरिज्म इस लेवल पे अब उठा दिया गया है जहां पे लॉ भी रीच नहीं कर सकता, एंड इवन बियॉन्ड द रीच ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। अब सेकुलरिज्म को इतना सेक्रेट बना दिया गया है, इतना मतलब मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल बना दिया गया है कि अब स्टेट भी उसे पकड़ के नीचे नहीं ला सकता। And the Indian state is happy with this status because it helps the state to perpetuate power without much hindrance. Recall our explanation in the last paragraph about how the state establishes itself as a victim. Right? We just discussed कि भाई Indian state खुद को कैसे victimize किया. Once this narrative of victimization is established, the state seeks justice from the populace to give the state back what was lost when the crimes was committed by the Hindus. When Muslims were being tortured and murdered by the violent Hindutva mob, casteism was committing hatya, and when Mohandas Gandhi got killed by some Hindu, when India became backward due to poor Hindu rate of growth, when Hindus brought down Babri, although there wasn't any temple at this that disputed land, the list goes on and on. In order to get exonerated from all these sins, as per the Indian state, Hindus must repay their debts that they acquired by taking advantage of the victim, that is the state itself. What is the way to achieve this indemnification? It is achieved by Hindus accepting secularism as a principle of this land. The form of secularism that will always discriminate against Hindus. तुम हिंदू हो तो इसीलिए तुम गलतियां कर रहे हो, तो लेट्स मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहां पे सब लोग खुश रहेंगे, जहां अब्राहमिक्स भी खुश रहेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली सेकुलरिज्म। और ये जो सेकुलरिज्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब तुम अपना लोगे तो इसके थ्रू तुम्हारा जो हिंदूनेस है उसको थोड़ा बहुत काटेल करेंगे, थोड़ा टेलर करके थोड़ा शेप देंगे एक अच्छा सा, और तुम्हारा जो ये रॉ हिंदूनेस है इसको थोड़ा कम करके तुम्हें एक सेकुलर क्रीचर बना देंगे। राइट, तो तुम्हारा जो अंदर का जो हिंदुत्व है उसको थोड़ा खत्म करना होगा तुम्हें इसके लिए। राइट, एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल अपरेंटली, मैं हिंदू हूँ, मेरा हिंदुत्व में कॉम्प्रोमाइज करूंगा फॉर द बिगर कॉज, है ना? कौन सा कॉज है? टू अचीव अ स्टेबल स्टेट एंड वट एवर द फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म दैट विल ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हिंदूज, क्योंकि सेकुलरिज्म विल नेवर अलाइन विथ हिंदूनेस, तो ऑब्वियसली द सेकुलरिज्म by default will discriminate against Hindus. ठीक है, to the benefits of मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरीज। वो मतलब हिसाब से, एक हिसाब से तो बहुत कम है, बहुत माइनॉरिटी है, बट वो उन्हें ज्यादा फायदा देगा with the promise of a better future. बट हमें ये करना होगा क्योंकि इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छा है। By what time will this better future become a reality? The state never known, and we never know. But in the process of establishing this doctrine of villainizing Hindus and framing them as the oppressor and perpetrators, the state brings out and uh, hold the principle of this discriminatory secularism as a new sacred law of this land, something that is beyond the purview of any judicial, legislative, or even academic critics. This discriminatory secularism is the new holy cow that even the state promises to submit to and not touch or alter.
just because this discriminatory secularism helps the state to assume, perpetuate, and expand power in the very land of the Hindus. ठीक है? So this is the history of how secularism got adopted and accepted by the Hindus at the cost of Hinduism, right? At the cost of diluting Hinduism of this land. तो ये तो एक पार्ट गया. अब ऑब्वियसली इसके पीछे हिस्ट्री भी है जो हम लोग जानते हैं कि जब इमरजेंसी था उसके टाइम थोपा गया है सेकुलरिज्म हमारे ऊपर, और वो जो थोपा गया वैल्यू है जो डेमोक्रेटिक वे में डिसाइड नहीं हुआ, उसको सारे पार्टी दे कन्वर्ज टुवर्ड्स इट बिकॉज द स्टेट अपरेंटली वांट्स इट, और वहां से फिर हिंदुओं को और हिंदुत्व को इस इंडिया से धीरे धीरे द स्टेट, इंडियन स्टेट खत्म करने लगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनल चैप्टर विच इज सेकुलरिज्म द फाइनल टूल ऑफ हिंदू एक्सटिंक्शन. ठीक है, कुछ क्वेश्चन है क्या? फटाफट 2 मिनट अगर ले सकते हैं. I think you carry on. ओके, तो अभी Vijita, खत्म करते हैं. you हाँ finish हाँ it. हाँ, Yeah, finish it. Then we will do that. ठीक है, तो ये फटाफट खत्म करते हैं. तो हाँ, सेकुलरिज्म एज द फाइनल टूल ऑफ हिंदू एक्सटिंक्शन, राइट? नाउ from the very savage brutality of Islamic conquests to colonial shackles imposed by the British, the Christians pretty much. And now the moral corruption of the secular Machiavellian Indian state, a chilling and an undeniable pattern is emerging, right? One that reveals the cyclical and relentless subjugation of the Hindu people by forces disguised as bringers of divine justice, enlightenment, and modernity, right? Throughout history, the Hindu has remained the target of all killing forces, cloaked in the deceptive rhetoric of religion, civilization, and now secularism. The assertion that the genocide killing of Hindus has been carried out by the Ashrafs in the name of Sharia and by the British in the name of industrial progress will now be executed by the Indian state under the banner of secularism. And it is not a mere historical fact, it is a terrifying prophecy for the future. It is disgusting how secularism, once adopted as a neutral principle, has been perverted into an Abrahamic weapon of division, alienation, and the eventual genocide of Hindu race and identity. Secularism imposed on India like a Trojan horse with the fake vision that it would safeguard religious freedom and plurality has evolved into an ideological weapon, one that has become indistinguishable from Abrahamic values. This transformation is no accident. It is inevitable result of the Abrahamic infiltration of Indian polity, using the language of secularism to further the agenda of religious homogenization. We know that ideologies are not neutral. They reflect the material conditions and power structure of society. And now secularism in India, it stands as one of the most unfortunate ideological legacies imposed on this nation by the unholy alliance of Congressy Babus, British Sahibs, jihadi extremists, and the communist bootlickers of Russia and China. I mean, it was not decided by Hindus that India will be a secular state, right? So it's decided by Congresses and communists and the British and the jihadi extremists, right? Who so these jihadis they got their own two Islamic nations, but in India they want a secular Indian state. So these four forces played a role in the partition of Bharatvarsha. Over the last 70 years, since the transfer of power in 1947, secularism has become the most sly and pernicious ideological superstructure, sustaining and legitimizing the power of Abrahamic elite, whether Islamic, Christian, Marxist, or in its more insidious form, the so-called secular intellectual class pushing for the westernization and Abrahamization at the expense of the pious Hindu values of this land. It is the freakiest work of art derived by these Abrahamics, whose intention morality is rooted in the deepest resentment against Sanatana Dharma. Right? Why did they agree to secularism? Because they had their intention morality that we hate Hindu Dharma anyway, but they are the majority. तो कुछ दिनों के लिए मुआहिदा साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं,
एंड उस जो सेकुलरिज्म का जो बैकडोर है उसके थ्रू इस लैंड में घुस के फिर हिंदुओं को कन्वर्ट करेंगे. These Abrahamics dissatisfied with their own importance कि सीधा तो नहीं घुस सकते, सीधा अगर कुछ प्रचार करेंगे, हिंदुओं का ऑलरेडी स्क्रिप्चर है जो हमारे साथ लड़ लेगा और दे विल प्रूव देयर सुपीरियरिटी, तो हमें बैकडोर से घुसना होगा. So their cities, the Abrahamics are dissatisfied with their own importance. They create systems of morality that mask their desire for vengeance and domination. तो वो पीछे के दरवाजे से घुसते हैं और एक मास्क लगा के घुसते हैं. ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ सेकुलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारत is nothing but a hollow, disembodied external morality that seeks to create a false equality between all religions, regardless of their inherent contradictions. मतलब सब धर्म समान है. This is a stupid statement, right? যত মত তত পথ. If there is যত মত তত পথ, then all paths are equal, uh, which is a contrast in itself. अगर যত মত তত পথ, अगर all, if all paths are valid, then equally valid, then they are identical paths, right? तो ये जो सिखाया गया उस हिसाब से फिर हम अगर देखें तो हिंदू माइंड को एक ब्रेन वॉश किया गया कि सारे रिलीजन इक्वल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन. Secondly, not all religions are equal. They have their own value system. That's why they are different. But secularism does not agree to that. Secularism believes in a very false premise that all religions are equal. Anyway, the Indian state over the last 1,000 years has been an abysmally abnormal entity in an otherwise normal ancient nation. हमारे जो नेशन है वो नॉर्मल है, जो स्टेट है ये abnormal है, क्योंकि 1,000 सालों से सेम स्टेट है, and that is the Hindu hating state. The same Indian state is continuing for the last 1,000 years. Essentially, they are this is the same state. Okay, it has historically and selectively used secularism as a tool to perpetuate its power, infiltrating the deepest corner of this nation, where it masquerades as a neutral institution, while in reality enforcing a form of soft theocracy, one that is Abrahamic in essence, which abhors, hates Hindu Dharma, deprives Hindus of creating and managing their own institutions. It labels a proud Hindu as communal, degrades and disparages the term itself. In the name of secularism, the Indian state has tacitly endorsed the marginalization of Hinduism while elevating the cultural and religious ideologies of so called minorities, particularly Islam and Christianity. इस्लाम इज मतलब हिस्ट्री बुक में अब पढ़ाया जाएगा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और उसके हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाएगा इस्लाम इज अ लिबरेटिंग फोर्स, हिंदुइज्म इज अ प्रीमियबल मेडिएवल फोर्स, क्रिश्चियनिटी इज अ इंडस्ट्रियलाइजिंग फोर्स. तो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, हिंदुइज्म इज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट, सो हेंस हिंदुइज्म इज अ यूजलेस एंड एंटी इंडियन कॉन्सेप्ट. नाउ सो यहाँ पे एक चीज छोड़ो, इसे रहने दो. मैं थोड़ा अलग डिबेट करना चाहता है, हेगल में जाना चाहता था, बट अभी के लिए रहने देते हैं. आई थिंक वी आर एनीवे रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो हाँ, और एक दो पॉइंट जो बोलना था मुझे. द इंडियन स्टेट इन इट्स परसूट ऑफ मेंटेनिंग पावर has furthermore systematically otherized the Hindu identity. Secularism in this context does not offer a neutral ground for coexistence. It is a tool for fragmentation, otherization, and dehumanization of Hindu community, preparing the ground for another upcoming Hindu Hatya. Secularism enforces Hindus to view themselves through the lens of an alien ideology. मतलब ये हिंदुओं का जगह है, बट स्टेट ने एक ऐसा आइडियोलॉजी ले लिया जो बाहर का आइडियोलॉजी है, और हिंदू को एक वो बाहर के आइडियोलॉजी के हिसाब से खुद को जज करना होगा, right? So hence secularism enforces Hindus to view themselves through the lens of an alien ideology. Just as the Christian church in the medieval Europe used the concept of heresy to fracture and control, secularism has functioned as a modern day tool of ideological heresy. The Hindu who does not comply with this new secular order, who refuses to assimilate into this new framework, is labeled a kafir, an outsider, a heretic, and undesirable in Indian state. Okay? So, so this is now the Hindu identity is no longer allowed to be a force of self-affirmation. It is now something that must be continually justified against an ever-expanding set of foreign ideological constructs.
तो जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाएगा उसका कॉन्स्ट्रक्ट भी अलग होगा, उसका हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं होगा, और हिंदुओं को खुद को सेल्फ एफर्म करने की कोई मौका भी नहीं मिलेगा। उसे हमेशा जज किया जाएगा with alien ideology and alien ideological construct within university, within state, तो हिंदू को हमेशा वो अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। Thus, secularism becomes not a refuge for freedom of belief, but an ideological gauntlet through which the Hindu identity must pass, only to emerge fractured, diluted, subjugated. So, in the process, हिंदू जितना भी कोशिश कर ले, हिंदू पास नहीं होगा, इसमें हमेशा फेल होगा, क्योंकि हिंदुइज्म सेकुलर नहीं है, राइट? सो हिंदुइज्म विल हैव टू पास थ्रू दिस स्लाई फिल्टर, जहां पे हिंदू कभी जीत ही नहीं सकता। And this secularism is totalitarian. It must infiltrate every nook of Indian thinking, culture, habits, festivals, education, research, history, and geopolitics. Every spontaneous aspect of Bharat must be twisted, toppled, and whitewashed in the process to create a secular Bharat. And like any other totalitarian ideology, it has to be swift, brutal, and efficient. It attempts to saturate the society as quickly as possible. सेकुलरिज्म को धीरे धीरे नहीं थोपा जाएगा। सेकुलरिज्म विल बी स्विफ्ट, brutal, and efficient because it is a totalitarian ideology. It quickly creates a hegemonic ideological environment, and once dominate, it leaves little room for dissent. This efficiency is not accidental. It is built into the very structure of an Abrahamic system. मतलब सेकुलरिज्म इम्पोज कब हुआ था? 70s में। और इतने में आप देखो कि किस हद तक ये मच गया है कि कोई भी हिंदू हिंदू नहीं है अभी। सो दिस इज व्हाई इट वाज स्विफ्ट, ब्रूटल एंड एफिशिएंट। इट अटेम्प्ट टू सैचुरेट द सोसाइटी एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि रिस्पॉन्स हिंदू रिस्पॉन्स करे उससे पहले सेकुलरिज्म से सोसाइटी को सैचुरेट कर देना होगा। This efficiency is not accidental. It is built into the very structure of any Abrahamic system. This secularism is not merely an ideology. It is an instrument of state power designed to maintain the dominance of the elites by reducing cultural diversity and consolidating religious and ideological control. ऊपर कोई लोग बैठा हुआ है, कोई आईएएस बैठा हुआ होगा, कोई नेता बैठे हुए होंगे, कोई अशराफ बैठे हुए होंगे, कोई पोप बैठा हुआ होगा, जो डिसाइड कर देगा कि इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसका मापदंड सेकुलरिज्म है, और इसके थ्रू दे विल कंसोलिडेट, दे विल कम टुगेदर, नेता, जज, आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, मिशनरी सारे एक हो जाएंगे, अशराफ सारे एक हो जाएंगे टू कंसोलिडेट रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने का मौका मिल रहा है। एंड व्हाट आई सेड, you mind one thing, I said religious and ideological control, because Indian secularism is without a doubt the new religion of India, a new Abrahamic religion that is born out of the zimmihood of Hindus, the dhimmihood of Hindus, from the shadow of their own negation। ठीक है, मुझे हिंदुओं को वो बनना पड़ेगा जो हिंदू नहीं है। So it is a shadow of Hindus' own negation. It is the new form of imperialism conceptualized to completely annihilate Hindus from the face of the earth. Indian secularism is the ultimate instrument of Hindu Hatya, wielded to mount this nation's destiny eventually towards a Hinduless Bharat. So this is my submission on this topic, and here I call it an end from my side. Yes, thank you, Bijeet. We really appreciate your time, your effort. You're able to speak for almost an hour and a half. So we have a guest with us, M. Shastri. M. Shastri, you are there? Yes, I'm here. Yeah, please go ahead if you have any comments or any questions for Bijeet and from myself as well. Amazing work, Vijita. I think you bring about a certain level of envy in me because you have written extensively on this topic. It's very evident that you know what you're talking about. Good work. Yes. Also, I will do a bad thing and also complain a little bit because I am not able to procure your books, and the only way I learn about what you have written is through this channel itself.
The fault is not yours, but I think it's the way in which Garuda Prakashan works. They simply do not. This is one thing that I do not understand about Garuda Prakashan. Please pass this on to them. Is that they insist that the buyer should also be Indian or a resident in India, right? Like if I live abroad and I like what you write, I should be able to procure your book through Garuda Prakashan. You can get it from garuda.us. Okay. Huh. So, garuda.in for Indian customers, and for US readers, it's garuda.us. You Okay. go there, Then I'll you'll look. find my book. But Okay. this Then. lecture is one chapter from my upcoming book. Okay. I'm planning to name it the I mean, history of Hindumisia and Hindu genocide. There, I analyzed some paradox of Abrahamic values, some six external enemies. So हिंदुओं के अंदर जैसे six internal enemy है, मैंने एक षडशत्रु एक framework बनाया है. वो Hmm. inspired by पंचमक्कार theory given by संदीप देव and संजय दीक्षित जी. उसको थोड़ा एक्सटेंड करके साढ़े शत्रु एक फ्रेमवर्क बनाया मैंने. तो वो सब जो है वो हिस्ट्री ऑफ हिंदू से हिंदू जेनोसाइड में एक फ्रेमवर्क मैंने जो ढांचा बनाया था, अब उसे एक्सटेंड करके मैं उसको फिलोसफी पे ले जा रहा हूँ. और आई एम कमिंग अप विद अ बुक which probably will be named Conscience of a Faceless Man, a critique of spontaneous intention and Abrahamic morality, जिसमें मैं आई एम ट्राइंग टू स्केच, मतलब आई एम ट्राइंग टू कम फ्रॉम अ वेरी फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो अब्राहमिक मोरालिटी है वो एग्जैक्टली कहाँ पे गलत है, क्योंकि इट इज और एग्जैक्टली कहाँ पे वो हिंदू मोरालिटी से अलग है. ये इसलिए बताना जरूरी है कि एक हिंदुओं को समझना चाहिए हिंदू किस हिसाब से सोचता है, उसका मोरल वैल्यूज क्या है, और एक अब्राहमिक बंदा कैसे सोचता है, उसका मोरल फिलोसफी क्या है. इसके लिए मैं सेकेंड बुक लिख रहा हूँ और शायद एंड ऑफ द ईयर तक खत्म हो जाएगा. इट्स जस्ट एक्सटेंडिंग, मतलब 3 साल लग गया मेरा हिस्ट्री ऑफ हिंदूमिसिया बुक लिखने में. 1.5 साल लगा था, 1.5 2 साल लगा था. 1.5 लाख वर्ड है. और ये वाला जो फिलोसफी का बुक लिख रहा हूँ ये 3 साल लगा 50,000 वर्ड लिखने हैं. तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई वांट इट टू बी अ वेरी, बिकॉज इट इज अ फिलोसॉफिकल वर्क, इट हैज टू बी दैट मच इम्पैक्टफुल एंड प्रोवोकेटिव एज वेल. तो ये बुक आपको मैं बता दूंगा, यहीं पे हम लोग अनाउंस करेंगे ये बुक जब आ जाएगा. बट यू कैन गो टू garuda.us फॉर द फर्स्ट. Excellent, Bijita. But I do also want to take this opportunity, and I think like you bring about a very interesting point, right? And I'm going to combine what Salvatore Babona says in his book Dharma Democracy as well. Like Salvatore comes at it from an outsider's perspective. I think what you are presenting is more like an insider's perspective. If you combine the two, it actually presents a more rounded perspective of what is actually happening in India, right? Right. So I think in some sense, like when we became independent, the overall expectation of everybody, including the Congress party, maybe the exception might be Nehru, um, was that we'll adhere to some form of dharma, right? That we all obviously we also need to adhere to Yuga Dharma, which is why we pursued Hindu code bills, right? But as a whole, society would follow its own Swadharma, and the state would follow a form of Raj Dharma, right? But what ended up happening is that I think as because Nehru became a prime minister, instead of the state following Raj Dharma, it imposed upon society and made it society's duty to follow a Rajya Dharma, that is basically duty towards the state, right? In some sense, you could basically say that um, uh, this is the basic difference between, like, say the European form of nationalism and the Indian form of nationalism, right? Where our form of nationalism basically looks at it from a sense of like Rashtra Dharma and Swadharma, whereas the European form basically ensures that people adhere to Raja Dharma. That means they have duty towards the state, right?
And I think Hmm. that's where things have gone wrong. And secularism is a is a manifestation of that Rajya Dharma, that we need to adhere to what the state has to say. Right. So, in some sense, I think if we want to reverse this, then we need to fundamentally change how the state looks at people, and we need to basically turn it towards like Rajadharma, right? And we Right. do get some sense in this in the more parochial politics that we see in the hinterland, right? Where the prime minister or even politicians will always say, "मैं जननायक हूँ, मैं Hmm. जनसेवक हूँ," right? "मैं प्रधान सेवक हूँ." I think that polity needs to be more seriously scrutinized and also more seriously demanded towards that. Hey, you're a state, we are Hindu Rashtra. We have no what do you say, um, uh, we there is no necessity for us as Hindus to basically follow Raja Dharma, but there's Hmm. absolutely a necessity for the Raja to follow our Swadharma. Right. Yeah. Agreed. And for the Europe, as I said, because their morality is externalized, so they don't take the um, responsibility for their morality. They have a scripture and they have to, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, वो बाइबल भी हो सकता है, बट दे नो दे विल बी जज्ड बेस्ड ऑन कि बाहर क्या लिखा हुआ है, राइट? तो उस हिसाब से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, और वो लोग उसी हिसाब से सोचते हैं कि एम आई वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड मी। फिर उस हिसाब से जब सोचने लगता है, फिर वो सोचता है यार, अगर रिलीजियन आएगा, इट इज गोइंग टू वायलेट मी, क्योंकि वो अपने फिर फ्रीडम के बारे में सोचता है कि आई शुड, मतलब इतना तो होना चाहिए कि आई शुड बी एबल टू स्पीक फ्रीली। अगर बाहर से जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोहिबिटिंग मी फ्रॉम स्पीकिंग फ्रीली, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो वहां पे फिर वो सेपरेट कर देते हैं कि ठीक है, बिकॉज नेसेसरीली आई हैव टू ओबे बाय द स्टेट, हेंस मुझे थोड़ा छूट दो कि रिलीजन को स्टेट से अलग करो। तुम अगर वो नहीं करोगे, फिर रिलीजन मेरे ऊपर नेसेसरी ड्यूटी बन जाएगा, नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, विच आई मस्ट ऑब्लाइज टू। और मुझे पता है कि ये हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो रिलीजन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट, दैट्स व्हाई कीप रिलीजन असाइड फ्रॉम द स्टेट। तो वो लोग उस हिसाब से सोचते हैं। हम लोग एज ए हिंदू कैसे सोचते हैं कि मेरा एक ड्यूटी है, मेरा एक ऑनर है, एक ड्यूटी है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। राजा का एक ड्यूटी मतलब एक धर्म है, उसके हिसाब से राजा काम करेगा। और यहाँ पे संघात इसीलिए नहीं होगा बिकॉज दिस इज कॉस्मिक ऑर्डर। व्हाट इज कॉस्मिक नेचुरल ऑर्डर? कॉस्मिक नेचुरल इज समथिंग कि इफ यू हैव टू नेचुरल ऑर्डर्स, इफ यू कीप देम साइड बाय साइड, इट वुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, राइट? तो यहाँ से आता है कि मेरा जो सेंस ऑफ ऑर्डर है, सेंस ऑफ धर्म है, राजा का जो सेंस ऑफ धर्म है, इट शुड नॉट नेसेसरली कोलाइड। अगर कोलाइड कर गया तो हम में से कोई गलत है। So it is a very spontaneous order, spontaneous morality that is emerging from within, जो राजा के अंदर से भी आएगा और जो प्रजा के अंदर से भी आएगा। Hence it is not going to be violated because it is natural. It is not a contract between the राजा and प्रजा। जब सेकुलरिज्म बनाते हैं, सेकुलरिज्म जैसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह थोपा गया है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू बोल रहे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए मुझे, नहीं तुम्हें तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव द इन्फिनिट पावर एंड इन्फिनिट राइट टू वायलेंस। अगर तुम ज्यादा हिंदू बनोगे तो आई विल परपिट्रेट वायलेंस ऑन यू। दिस इज द वर्ड्स ऑफ द स्टेट, राइट? कि तुम हिंदू बनोगे तो तुम्हें गलत केस में फंसा देंगे, ठीक है, कि हिंदू टेरर एंड व्हाट नॉट, ये सब नैरेटिव क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे अलग हो गया, जहां से एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, वहां से वो धर्म भी लुप्त हो गया। अब हिंदुओं को बचने के लिए री इन्वेंट करना पड़ेगा, प्रोबेबली अ न्यू सॉर्ट ऑफ ऑर्डर which will be between the sense of contract and sense of dharma, because जो sense of dharma है, कोई अब्राहमिक बंदा तो इसमें एग्री नहीं करेगा ना। वो बोलेगा कि नाउ आई हैव टू साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई वुड आई? जब देश स्वाधीन, मतलब देश को जब फ्रीडम मिला था,
I signed to this already existing constitution with the footnote कि it will be secular. अब वो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह देख रहा है ना, उसका माइंड इस तरह से चलता है, वो धर्म के हिसाब से थोड़ा ही देख रहा है. So I I don't do. know what is the answer. No, I'll push back on a little bit on you, right? Like, Hmm. why shouldn't Abrahamics basically abide by our contract, right? I'm a Hindu in Right. a Western country. I abide by their contract. I think this reciprocation is naturally expected Right. from an Indian in India. We should not be. We should. I think this is what you call like. I think you're implicitly becoming secular because No, oh, no, no. I am you know, saying कि this जब कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं ना, वहां पे फिर जिसको हिंदुत्व बोला जाता है इन द मार्क्सिस्ट वे कि हिंदुत्व ये पॉलिटिकल आइडिया, वहां पे ये हिंदुत्व बन जाता है कि ओके no. I दिस इज द mean, कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट ओबे. मतलब हिंदू what the जब mark. बोल रहा है कि दिस इज कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट ओबे, वहां पे वो पॉलिटिकल एक ओवरटोन आ रहा है. एंड No, that's आई एग्री विथ यू कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें साइन करना पड़ेगा. right. I mean, we should definitely push our framework onto Abrahamic. They see राइट. we should not abide by them. Like when एग्रीड. I, as a Hindu living in a Western country, have to abide by an एग्जैक्टली. Abrahamic contract, despite me having fundamental differences against it. Like राइट. I abide by the rules over here, right? So राइट. the same expectation is not out of the park if I have to expect Abrahamics to abide by एग्री. our contract. And Right. to be And the honest, like binarity is always already there. I mean, this binarity was not created by the Hindus. This binarity was created by the Abrahamism. yeah, So and if I'm let me just imposing a contract as a majority on you, which is a very just and kind contract. I mean, it's not like a very much मतलब Abrahamic concept, right? Contract. So you must abide by it. कि भाई ठीक है, मतलब I am not going to let you propagate and convert. I mean, I am not going to let you propagate and also convert our people into your fold. Right? ये contract है जो मानना पड़ेगा because I believe I am right. Just like you believe you are right, I believe I am right, and I am in majority. Hence, I am going to impose a contract on you. And this is a valid thing. I mean, obviously, if the majority is assuming the power, and if the majority is united and have the guts to be the state, then the state will be guided by this majority. I mean, it is not a fascist idea, right? If it is just, if it is spontaneous, and if it does not have a dhandabaji, a intention morality within it, then I don't think it is a fascist idea. It is a very dharmic idea, and it is a sort of mechanism to save itself from these tribal sort of doctrines, which are Abrahamic doctrines. yeah, and the other thing is I think uh, the we need to move away from like our legal framework also needs to fundamentally change, right? Like if you read say dharma shastras or even artha shastras or any kind of shastra literature, it's very clear that our criminology is not based on the Abrahamic concept of a soul, right? Right. It's based on this concept of karma, whereby your actions and your consequences. What is Right. your actions and what consequences should be there? Like our entire justice is basically defined on those terms, right? So Hmm. I think beyond just moving. I, I mean, if we are going to go after secularism, we might as well also go ahead and do the extra step and just redefine the judicial system as well. Like Right. we Right. have, I mean, the state itself needs very fundamental changes, and perhaps we need to go back to the constitutional debate because there's a lot of discussion going on there, Right. and derive the state we want going forward. Right. Right. I mean, after 1949, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट तो हुआ ही नहीं है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अब
वो होली बुक बना दिया गया है। अम्बेडकर को भगवान बना दिया जा रहा है आजकल। सो जबकि अम्बेडकर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं किया है टुवर्ड्स दिस राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? आई मीन, आई तो मीन दिस इज अनफॉर्चुनेट। वो अभी भगवान है, वो कल भगवान रहे या ना रहे, आई थिंक वो काल ही बोल सकता है। आई मीन इन द सेंस लाइक हम लोग we give too much importance to deification, but वो राइट, कभी उतना टिकता नहीं है वो, if you look at राइट। the long arc of history. Right, yeah, good work, good work. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Yeah, thank you, Shastri, for coming, for joining. Really appreciate. थैंक्स। We'll take. Do you have any more questions, or we'll go back to a few other audience questions? Okay, Shastri has left. Let's take a few questions. I think Boshalidi had a very early. She had asked a question. Let me go through that itself. Let me see. Yeah, this is the first question we received from Boshalidi. So please talk about how most people don't understand the difference between pluralism and secularism, and how this is exploited by the minority appeasing political parties. Interesting. Right. See, the point is that secularism is a homogenizing idea. ये बोलता है कि सबको एक जैसा होना, मतलब ऑब्वियसली देयर आर माइनॉरिटी राइट्स, मतलब आर्टिकल 25 to 30 तो माइनॉरिटी राइट पे है, माइनॉरिटी को तो अपीसमेंट दिया गया है ना। आर्टिकल 25 और 30 को अगर तुम हटा भी दो कि ठीक है, मतलब उस हिसाब से अपीसमेंट नहीं दिया गया है, मान लो, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट इट लेटर, और उसी के थ्रू ये सब जो भी डिस्टॉर्शन है वो बहुत ज्यादा घुसा है। बट फॉर अ मोमेंट एज्यूम कि 25 to 30 आर्टिकल 25 to 30 एग्जिस्ट नहीं करता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवन देन सेकुलरिज्म डजंट टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, मतलब इट डज नॉट एंडोर्स एनी डाइवर्सिटी और डाइवर्सिफाइड थॉट, ठीक है। सेकुलरिज्म टॉक अबाउट होमोजिनाइजेशन, विच मीन कि सबको एक जैसा होना पड़ेगा, एक जैसे चीजों में बिलीफ रखना पड़ेगा, सबको अपने अपने अंदर का जो जो भी है, धर्म हो जाए, रिलीजन है, वो खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। विच मीन कि तुम्हारा जो हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए जो बंगाली जो शाक्त है, उनका एक अलग सा एक इवोल्यूशन है। फिर उधर अपना जो जो मान लीजिए तांत्रिक बुद्धिज्म है लद्दाख में, उनका अपना इवोल्यूशन है। साउथ में एक अलग इवोल्यूशन है, आंध्रा साइड अलग इवोल्यूशन है, इवन बंगाल में वैष्णव है, उनका अलग इवोल्यूशन। तो ये सबको अपना सॉर्ट ऑफ यू, इट्स अ मार्क्सिस्ट आइडिया इन द सेंस कि you have to, in order to be homogeneous, you have to sort of erase this your history and your ancestry as well. तुम जो मतलब इतिहास से जो तुम अडॉप्ट कर रहे हो, तुम्हें जो हिस्सा मिल रहा है ऑफ योर हिस्ट्री, उसे भी तुम्हें मिटाना होगा। सबको एक जैसा होना पड़ेगा, सबको सेकुलर होना पड़ेगा। नाउ आइडियली ये होना नहीं चाहिए, आइडियली सेकुलरिज्म स्टेट का प्रॉपर्टी होना चाहिए, इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। बट ये बुक्स के जरिए, ये जुडिशियरी के जरिए, ये डिफरेंट लॉ के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, न्यूज के जरिए इसको थोपा जाता है कि तुम क्यों राम टेम्पल के बारे में बात कर रहे हो, या फिर राम टेम्पल की जगह टेम्पल भी रहेगा और पता नहीं क्या क्या रहेगा, मतलब एक मस्जिद भी रहेगा, एक साथ रहेगा, म्यूजियम बना देंगे। मतलब जस्ट थिंक अबाउट द डिस्टॉर्शन। मतलब ये हिंदुओं का लैंड है भाई, या यहाँ राम का जन्म हुआ था, ये हमारा बिलीफ है, रिकॉर्ड्स मौजूद है, दे दो, जगह खाली करो। नहीं, ये नहीं है, सबको होमोजिनाइज करना पड़ेगा, वहां पे एक सर्वधर्म मेमोरियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज सेकुलरिज्म। प्लूरलिज्म क्या है? प्लूरलिज्म बोलेगा कि ठीक है, हिंदुओं का जगह है, उसे छोड़ते हैं, अपने मुस्लिमों के पास तो काफी मस्जिद वगैरह पड़ा हुआ है, हम लोग वहाँ नमाज पढ़ेंगे, वी एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड टू हिंदूज, और हिंदुओं को जो हिस्टोरिकली इंजस्टिस हुआ है और उसको हम समझते हैं, ठीक है। हमारा एक अलग सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री है, which is a little more recent history, which is the Muslim history, but we are part of this land which is called India. इंडिया में सारे जैसे अलग अलग फूल है, अलग अलग पेड़ है, तो उसी तरह से हिंदू एक बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ है, हम लोग नए पेड़ है, सब एक साथ रहेंगे। इट इज अ इन द वुड्स एवरीवन
हैज इट्स ओन प्लेस, ये नहीं मानना है। ये हिंदुओं को डाइल्यूट होना पड़ेगा, ठीक है, उसे सेकुलर बनना पड़ेगा, और उसे जो सेकुलर नहीं बनेगा वो काफिर है। सो ये जो होमोजिनाइजेशन है इसे सेकुलरिज्म बोलेंगे, और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड नॉट नेसेसरली, मतलब इट्स यूनिफिकेशन एंड नॉट होमोजिनाइजेशन, उसे प्लूरलिज्म कहेंगे, जहाँ पे आइडेंटिटी अलग अलग तरह से रह सकते हैं बट एसेंस एक जैसा रहेगा, दैट इज प्लूरलिज्म। Yes, so we have one more question from Moinak. Is not Constitution copy of Government of India Act 1935 राइट राइट with certain addendums? राइट एग्जैक्टली। और इवन 1935 में फिर उसके बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बना था, हाँ, दिस हैपेंड इन 1937, जब पहले Muslims in India were as diverse as Hindus in India because they were also Hindus, right? और जैसे मैं बताया था कि अगर एक एम टाइटस का एक बुक है इंडियन मुसलमान, वो पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इंडिया में वेजिटेरियन मुसलमान होते थे, मुसलमान टेम्पल के रखवाले करते थे, केरला में मेट्रीलिनियर सोसाइटी होता था, मेमन जो कम्युनिटी होता था वो हरिओम बोलते थे, वो त्रिमूर्ति के उपासक थे। मेमन कम्युनिटी जो बॉम्बे ब्लास्ट किया है उस कम्युनिटी का बच्चा, ठीक है। फिर ये जो 1937 का जो मुस्लिम लॉ आया, वो एक्चुअली मुस्लिमों का जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म कर दिया और सारों को एक जैसा मुस्लिम बना दिया, ठीक है। उससे ऑब्वियसली जो इंडिया का इस्लामिक मूवमेंट है उसको बहुत फायदा हुआ, बट जो मुस्लिम डाइवर्सिटी है वो खत्म हो गया। केरला से जो मैट्रिमोनियल सोसाइटी वो खत्म हो गया, है ना। बाकी जगह से जो लिंगुअल डाइवर्सिटी है वो कुछ हद तक खत्म हो गया। लड़कियों का जो राइट था वो कुछ हद तक खत्म हो गया। और ये सब पंच करके फिर अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें ऑब्वियसली जैसे इस्लामिक लड़कियां हैं उनका राइट तो उस हिसाब से कम हो गया। फिर हिंदुओं के लिए अलग से मैरिज एक्ट लाया गया। मतलब ये जो हौज-पौज किया गया वो तो बिल्कुल ही सेकुलर नहीं था। तो इंडियन स्टेट बिकेम द मोस्ट अनसेकुलर, इट इज नाउ एक्सपेक्टिंग हिंदूज टू बी सेकुलर, जो अपने आप में एक डिलेमा है। Yeah, this is an interesting question from Boishaliti again. Please talk about beef is equal to secularism, but pork is not equal to secularism, and how Hindus are drawn to this stupid discussion while they pass laws to disadvantage Hindus. राइट राइट। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये फिलोसफी समझना पड़ेगा। दिस थिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन अ लीगल वे और इन पॉलिटिकल वे और इन द टिपिकल न्यूज वे। न्यूज में अगर ये दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम एन अर्नब शो। अर्नब गोस्वामी के शो से ये पता नहीं चलेगा। ये पता करने के लिए हमें ये जो 2 घंटे का डिस्कशन किया ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से एक अब्राहमिक रिजनमेंट था वो हिंदुओं के अंदर थोपा गया, हिंदुओं के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट किया गया, फिर हिंदुओं के अंदर एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी क्रिएट किया गया। इन द मीनवाइल इंडियन स्टेट फिर बाकी लोगों को पादरी और फिर जो अशराफ है उनको घुसाया इस पिक्चर में, ठीक है। हिंदुओं के अंदर रिजेंटमेंट क्रिएट कर खुद के लिए भी और अपने हिंदुत्व के लिए भी, वो जो रिजेंटमेंट क्रिएट है उसको लगा के फिर कन्वर्शन क्रिएट किया, या फिर बी फिटिंग ये सब सिनेरियो लाया। फिर लाया कि मतलब जैसे इंडियन सेकुलरिज्म आया है ना, इसी स्प्लिट से, इसी सेंस ऑफ गिल्ट से, इसी सेंस ऑफ बैड कॉन्शियंस से सेकुलरिज्म हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया, और ये एक्सेप्ट करते ही हिंदू काफिर हो गया, अपने लैंड में हिंदू काफिर हो गया। इफ हिंदू इज अ हिंदू, if a Hindu is a Hindu, he is a kafir in the eyes of a state because the state is secular, and by being Hindu you are being unsecular. तो ये प्रूव करने के लिए कि हिंदू फिर एक जैसे जिम्मी बन गया, एक धिम्मी बन गया, एक काफिर बन गया, वहां से उभरने के लिए हिंदुओं को फिर खुद को प्रूव करना पड़ता है। जो एमटीवी रोडीज में बोलता है ना कि तू अपने आप को प्रूव कर, है ना, एक सेंटेंस आता था, मतलब इसका मुझे समझ में नहीं आता था इसका मीनिंग क्या है, कि अपने आप को प्रूव करके दिखा दो। अब हिंदू अपने आप को कैसे प्रूव करेगा?
ये सब लॉ पास करके प्रूव करेगा ना, तभी तो रोडीज बनेगा एक हिंदू। इंडियन स्टेट के आइज में तभी एक हिंदू रोडीज बन सकता है जब वो ये सब वॉक ऑफ बिल पास करा सकता है पार्लियामेंट से। तो वही है कि ये एक रोडीज का गेम चल रहा है और इसमें हिंदुओं को जबरदस्ती धकेला गया है। Okay, this is an interesting take. You want to okay? You need you need a Tulu pump of skeptical intelligence to prevent your intelligence from naturally flowing down the realm of Abrahamic stupidity. Right, right. I don't It know is a how many people got the gist of it, but I don't anyway. know how many know Tulu pump. But I don't know whether Tulu, this word, very word Tulu is, uh, I mean, it's a generic word or it is a very typical Yeah, Bengali word. Tulu I means don't know. correct pull up, pull up. So water is pulled up. Water is Right, pulled up right, from right. the No, that I correct water. know, but Tulu pump we say for those pumps, right? I mean, Uh, Submersible pumps in technical jargon. Correct. So right, right. correct. So we need the dharma as a kind of a turupam to actually prevent us from going down the drain of Abrahamic stupidity. Right, That right. we You just gravity is have to be pulling. spontaneous. You have to be Exactly. spontaneous, what I said, right? And that is dharmic. Yeah, okay. I will take two more questions and we'll and don't worry. Most probably next week or maybe after week. I'm traveling next this weekend, so probably there won't be any podcast. But next week we will have a line of podcast coming. So also we will have Bijeet. If he wants to continue, we can have one more talk regarding this because people Sure, really like it. Okay. So we'll take sure. two more questions or maybe comments. Let's see some interesting comments. Okay. Okay. All are almost done. Mm, okay. Okay. This is an interesting comment. And this actually follow up. So once deracinated, detached from the tree, the twig dries up. It cannot produce Right. anything of value. So the second part is it can productively populate other lands adjusting as per climate condition. So Bashali is talking about specific regarding dharma. Okay, if Right, but this dharma, is this is beyond this. If you hmm, understand the metaphor here, uh, hmm, I mean, it is far beyond this. It is like a twig got deracinated and cut from the tree. Then the twig managed to get an axe and then walked up to the tree to cut it. It is not merely matlab, deracinating. It is going beyond that. It is beyond. It is uprooting the very tree from which you got detached and you got deracinated. This is what Hindus are doing right now. That was like bringing Waqf bill and all these things or opposing it when the amendment is being proposed, right? Bringing whatever division of caste bill that would divide Hindus based on caste and subscribing to it if Congress is bringing it is literally like twig walking up to the tree to cut it with an axe. yeah. Last, we thank Sri Harsha Namudri. He's one of our earliest subscribers, supported us a lot. So he got your book from Garuda. Okay, thank you. Thanks Yeah. a lot. So thank you, sir, and do read and do share your review with us as well, Yes, and also please. on Amazon. Okay, so that more people will able to read the book. And a request to everybody, like we are trying our best to produce bit more better content. So people who are watching, if you can take the membership, it will be really help us, and also you will get a chance to actually talk to the audience and talk to me if you want it. Okay, in any case. It will help us to So propagate as well yeah, and yeah. get viral as well. So, Yeah, so do consider taking the membership if you can, okay, or else support the podcast by sharing it, okay, by subscribing it, so that we can host more. And last one, next Saturday we are hosting Professor Salvatore Babones for his book on Dharma. So do join us for that. We are looking forward to it to talk to him and take his view on Dharma democracy from his recent book. So thank you everybody for joining.
Jai Shri Ram, Vande Mataram. Yes, Ram Bande Mataram. Thank you.